Sure. So I think we can perhaps get started. सबसे पहले देखते हैं कितने लोग हैं. Okay, we have good amount of attendance here. Sure. So perhaps we can get started. सबको मेरी आवाज आ रही है? Can anybody confirm the chat? Okay. Yeah, hi Shubhankar. Yeah, hi everyone. Sure. That's good. तो अगर आपको कहीं पे आवाज की दिक्कत वगैरह है या फिर कुछ समझना है तो feel free to barge in and you can just type your messages in the chat so that I will get to know if I mean we are facing some issues. We will keep like language of instruction as English, not entire English, ना कि पूरा हिंदी. हम मिक्स में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. So very good evening first of all. I understand that आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. शायद आप लोग सब मैच छोड़ के यहाँ पे सेशन अटेंड करने आए हो. तो आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर एंड सो वेलकम टू दिस कोर्स. इस कोर्स में हम लोग रैक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो रैक्स इज नथिंग बट रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. तो ये जो कोर्स है अपना, इसको मैंने एक सिस्टमेटिक वे में डिजाइन किया है. तो वो वे क्या होगा? बेसिकली इन वी विल हैव 4 सेशंस. तो इन दिस 4 सेशंस वी विल स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट सेशन जिसमें हम लोग एनएलपी और इंट्रोडक्शन टू एलएलएम के बारे में बात करेंगे. इन सेकेंड सेशन हम लोग रैक्स के बारे में बात करेंगे, एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है उस पर. इन थर्ड सेशन हम लोग रैक के साथ एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग कोडिंग वगैरह सब कुछ चीजें देखेंगे. एंड इन द फोर्थ सेशन वी विल ट्राई टू सी ऑल सॉर्ट ऑफ एडवांस रैक एप्लीकेशंस. ओके. So this will be the entire flow of these sessions. So like आज हम लोग NLP and introduction to LLM के बारे में बात करेंगे most probably. We'll try to see कि ये topic हमारा finish हो जाए आज के आज. So I will just like start off with my introduction first. So hello everyone, a very good evening. So myself Varun Raste. So I am working in Fractal as a data scientist. I have around 5 years of experience working in data science domain and around 1 year of experience in teaching domain. तो मतलब मैंने आज तक बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम किया है, इंक्लूडिंग क्लासिकल मशीन लर्निंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, फिर लाइक डीप लर्निंग प्रॉब्लम्स हो गए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स हो गए. करेंटली आई एम वर्किंग ऑन जनरेटिव एआई एक्सक्लूसिवली. सो आई मीन दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ. And yeah, I'm very fortunate that Nitish sir has given me this opportunity in order to take the sessions. So first of all, I won't be yeah, sure. So we will be covering everything in detail. Uh, मैं पूरे चैट को बेसिकली लाइक एट अ टाइम एक्सेस नहीं कर पाऊंगा since we have kind of pretty decent amount of audience, and if I start entertaining each and every chat message then perhaps what will happen is we will be digressed from our original topic और हम लोग मतलब कहीं और ही जगह पर टक जाएंगे. तो हम लोग एक ऐसी बात करेंगे कि I mean you can just write your questions in the chat and हम लोग उसको लास्ट के 10 या 15 मिनट में you will just exclusively go through all of your questions and then हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैं एड्रेस कर पाऊँ. Does that sound well? Can like you confirm yes or no? Okay, that's good. Great. So let's get started. So आज का हमारा टॉपिक है NLP and introduction to LLM. So before starting this actual course, I am assuming कि आप सब लोग को थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग, थोड़ा बहुत पाइथन, probably large language models as well, आपको इनका थोड़ा बहुत आइडिया होगा. So basically you might be aware of what is NLP, what might be LLM. It's okay if you are not into like very much advanced stage, but आपको एक basic idea होगा ऐसा मैं assume करके जा रहा हूँ. If you are having any issues, you feel free to like connect with me after the session. Perhaps we can just discuss all the resources if you are finding any issues anywhere. Okay. So let's get started. NLP and introduction to LLM. Okay. Just a minute.
लेट मी जस्ट रीशेयर माय स्क्रीन, कुछ इश्यू आ गया था. Is my screen visible? Great. तो आज के हमारे सेशन का जो फ्लो है दैट विल लुक लाइक दिस. तो हम लोग एक थोड़ा इंट्रोडक्शन टू एनएलपी के बारे में देखेंगे. फिर विल ट्राई टू सी व्हाट आर द ट्रेडिशनल एनएलपी प्रॉब्लम्स और उसके रिलेटेड एमएल अप्रोचेस. एंड देन विल ट्राई टू सी सम ऑफ द jargons which are used in natural language processing, जैसे एम्बेडिंग्स हो गया, वेक्टराइजर्स हो गया. देन इन ऑर्डर टू असेस योर आउटपुट हम लोग कौन से सिमिलैरिटी मेजर्स की बात करते हैं, फिर आरएनएन्स क्या है, एलएसटीएम क्या है, इंट्रोडक्शंस टू एलएलएम. देन वी विल ट्राई टू सी अटेंशन इज ऑल यू नीड, जो एक बहुत ब्रेक थ्रू पेपर था, उसके बारे में ट्राई टू डिस्कस सम थिंग्स. वी विल टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स इन डिटेल. विल टॉक अबाउट एनकोडर डिकोडर. देन विल टॉक अबाउट जीपीटी, which is generative pre-trained transformer. And then we will like just wrap up the session with some of the appendix where we will be trying to cover all sort of important definitions जो आपको शायद से आगे जाके एनएलपी में लग सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी द एंटायर फ्लो. आज के दिन वी वोंट हैव एनी कोडिंग और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एज सच. हम लोग सिर्फ पीपीटी के थ्रू कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. And in the next lecture as well, we'll try to like for 80% of the times, we'll try to go through the actual theory. 20% I will be just showing the practicals on the rags. And then in the third session, we'll be going through end-to-end problem statement, जहाँ पे हम लोग पूरा application build करेंगे, तो वो पूरा session coding होगा. But rest of these sessions will mostly we'll be dealing with theory. Okay, so let's get started. Yeah. So what is NLP? So NLP is basically, as it stands for Natural Language Processing. So in NLP हम सबको पता है कि कोई भी मशीन हो वो कभी भी इंसानों की भाषा समझ नहीं सकता. करेक्ट. सो उसको समझने के लिए इट विल ऑलवेज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ कोड्स, मोर प्रिसाइजली लैंग्वेज ऑफ बाइट्स. ओके, 1 zeros की लैंग्वेज इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज अ वेरी व्हाट यू से tedious task लाइक इन फ्रंट ऑफ ह्यूमंस कि हम लोग अपनी नेचुरल लैंग्वेज सेंटिमेंट एक मशीन को कन्वे कैसे करेंगे. तो ये जो भी मतलब टेक्स्ट रिलेटेड जो भी काम होते हैं, दोस्त का मतलब वो सारे काम बेसिकली एनएलपी में कवर होते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन पास करते हैं. एंड देन वी विल ट्राई टू सी हाउ दैट टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स. वेक्टर्स आर बेसिकली नंबर्स. तो मतलब कंप्यूटर को वो जो इंफॉर्मेशन है वो समझ जाए कंप्यूटर कि ओके मतलब ये बंदा सामने से ये इनपुट देना चाहता है. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. Okay, so we'll just try to look a very simple definition. So NLP applications transform unstructured text data into insights. So there are two types of data basically. एक होता है structured data, एक होता है unstructured data. So structured data आप उसको बोल सकते हो जो डेटा टैबुलर फॉर्मेट में होता है, जिसमें आपके पास एक टेबल्स होते हैं, जिसमें आपके पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं. वो टैबुलर डेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चला जाता है. और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में anything which is related to your text data or anything related to like image data, video data, sound data, वो सारी जो चीज है which cannot be explicitly expressed into form of tables, उन चीजों को हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं. तो एनएलपी का पर्पस क्या है, हम लोग को ये अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा को डिफरेंट डिफरेंट इनसाइट्स में ट्रांसफॉर्म करना है. ओके, और बिजनेस को कुछ रिकमेंडेशन देने या फिर जो भी हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं उससे हम लोग को रिकमेंडेशन देने. तो इसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या है, हम लोग कस्टमर सेंटिमेंट्स को एनालिसिस कर सकते हैं, कस्टमर ओपिनियंस को एनालिसिस कर सकते हैं. किसी प्रोडक्ट को आपने अगर लॉन्च किया है, जैसे आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट देखा होगा, तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको जो भी फीडबैक्स मिलते हैं, तो उस फीडबैक्स को अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वी विल गेट टू नो कि हमारे प्रोडक्ट में क्या लैक कर रहा है, अपने प्रोडक्ट में क्या अच्छी चीज है. हम लोग सेम चीज ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट में भी करते हैं. सो करेंटली इट्स एन इलेक्शन सीजन. सो इलेक्शन सीजन में होता है ऐसा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन सोशल मीडिया, राइट. एंड पॉलिटिशियंस आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि भाई हम लोग के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं. तो दे बेसिकली हैव एनालिस्ट रिक्रूटेड फॉर देम who will do such sort of analysis. तो से फॉर एग्जांपल आपने ट्विटर के पोस्ट दिए और आपने ट्विटर के पोस्ट पे एनालिसिस किया कि बेसिकली मतलब पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या एक पर्टिकुलर लीडर के बारे में लोगों के यूजुअल ओपिनियंस क्या है, आर देयर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स,
और आर देयर निगेटिव सेंटिमेंट्स? अगर निगेटिव सेंटिमेंट्स है तो कौन से टॉपिक्स को लेके है? तो मतलब वो पॉलिटिशियन अपने रैलीज में या फिर अपने से एजेंडा में ही कैन जस्ट इंक्लूड दोस टॉपिक्स, ही कैन एड्रेस दोस टॉपिक्स सो दैट विनिंग प्रोबेबिलिटी विल गो हायर। तो हम लोग एनएलपी टास्क के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो गया, क्वेश्चन आंसरिंग हो गया। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक पीडीएफ दे दिया, 300 पेजेस का पीडीएफ है, एंड देन आई टोल्ड यू टू आंसर मी लाइक एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम से पेज नंबर, एनी रैंडम पेज नंबर। तो इट एज फॉर ह्यूमन इट विल बी रियली अ डिफिकल्ट टास्क कि आपको 300 पेज का पूरा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको वो याद रखना पड़ेगा, फिर मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूंगा, देन यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट विल बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस, राइट? बट मशीन, if we are able to successfully like feed the information to machine, then machine can ingest the information, and no matter how how big the size of the document is, it will still be able to understand the document despite the fact it is a big document or a small document. It can be used for retrieving information out of it. Okay, so that will be a very useful use of NLP. Okay, so let's go to the next slide, where we'll be trying to see like how NLP problems can be solved with the help of traditional machine learning problems. Okay, so for some of you, it might be little bit at a very beginner stage, but this is more of an introduction, and I feel that it is very essential, in order to come up with a course which has all sort of introduction, coding as well as advanced parts. So don't worry, we'll be covering everything. Even if you feel that this might be a little basic, still we will try to cover each and everything. Okay, so be assured about that. So the next slide talks about taming text with the traditional techniques. So basically, deep learning तो like recent times में आया है, and all the developments in the deep learning जहाँ पे हम लोग इस like explicitly neural networks use करते हैं, वो तो अभी के टाइम्स से बहुत पॉपुलर हुआ है, but prior than that, natural language processing was heavily based on rules and statistical approaches. Okay, सो हम लोग एनएलपी में क्या करते हैं? एनएलपी में हमारे पास जो डेटा होता है दैट इज इन द टेक्सचुअल फॉर्मेट। से आपके पास कोई रिव्यूज हो गए, आपके पास कोई टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई, तो आपको उस डेटा पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग मशीन लर्निंग में डेटा क्लीनिंग करते हैं, जैसे आउटलायर ट्रीटमेंट करते हैं, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशंस करते हैं, कैटेगरिकल डेटा के साथ एनकोडिंग करते हैं। इन सेम फैशन वी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द टेक्सचुअल डेटा। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेसेस करते हैं? तो बेसिकली हम लोग टोकनाइजेशन कर सकते हैं, स्टॉपवर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं, स्टेमिंग कर सकते हैं, एंड लेमेटाइजेशन कर सकते हैं। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज इन एन लाइक अ वेरी शॉर्ट मैनर ऑफ टाइम। सो टोकनाइजेशन बेसिकली होता क्या है? आपके पास एक बड़ा पीस ऑफ टेक्स्ट है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू लाइक एंटायरली लाइक अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर टेक्स्ट। तो आप क्या करोगे? उसको डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स में डिवाइड करते जाओगे। What it means by token is basically you will like split the data into different words or different sentences. So you'll just break that entire text into smaller chunks in order to convert that chunk into a effective vector. Okay. So stopword removal एक ऐसा टेक्निक होता है। नेक्स्ट इज stopword removal. Stopword removal एक ऐसा टेक्निक होता है, सो आपके जो टेक्स्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे इररिलेवेंट वर्ड हो सकते हैं, जैसे द हो गया, अ हो गया, एन हो गया, एंड सो ऑन। ओके, नाउ ये जो वर्ड्स होते हैं या ये जो मतलब स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड्स होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू एड एनी सिग्निफिकेंट मीनिंग टू योर टेक्स्ट, बिकॉज ये बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का सिंटैक्स है, इसमें हम लोग को ये सारी चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है while forming a sentence. बट जब हम लोग उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो देर इज नो नीड, बिकॉज वो बेसिकली उस चीज को इनकॉर्पोरेट करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये वर्ड्स आर नॉट लाइक दैट हेल्पफुल, राइट? सो इन दैट केस आप क्या करोगे? इन स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करोगे। Okay, and then you will perform stemming or lemmatization. So stemming and lemmatization are the processes which are used in NLP, which are used to like find out the root form of any word. So for example, आपके पास अगर मैंने आपको ऐसा टेक्स्ट दिया कि आई रैन, आई एम रनिंग, एंड देन मैं बोल रहा हूँ कि आई रन एवरी डे। ओके, नाउ मैं इस टाइम में मैं रन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स या फिर 3 डिफरेंट वे में रन को यूज कर रहा हूँ। रन इज दी बेसिक वर्क, सो इन वन सेंटेंस आई एम यूजिंग रन एज रन ओनली, इन द अनदर सेंटेंस आई एम यूजिंग रन एज रनिंग, and in the third sentence I'm using run as ran.
ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ वर्ब को अपने टेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे तो अननेसेसरीली अपना कॉर्पस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एंड मशीन को ये नहीं समझेगा कि रन एंड रनिंग आर टू डिफरेंट एंटिटीज. सो इट नीड्स टू बी टोल्ड कि नहीं डूड, रन एंड रनिंग दीज टू आर सेम थिंग ओनली. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रनिंग को रन में लाना पड़ेगा. दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट आवर रनिंग लाइक वर्ड इनटू इट्स रूट फॉर्म विच इज टू रन. ओके, तो वो किससे करते हैं हम लोग, स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन से करते हैं. ओके, सो दीज आर बेसिकली प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो मशीन लर्निंग या कोई भी वेक्टराइजेशन करने के पहले अप्लाई की जाती है. एंड उसके बाद हम लोग आते हैं like, उसको वेक्टराइज करने के लिए. तो वेक्टराइजेशन क्या होता है, अभी आपने पूरे टेक्स्ट को क्लीन कर दिया, आपने अननेसेसरी सारी चीजें उसमें से हटा दी. अभी आपको मशीन को वो इनपुट देना है इन ऑर्डर टू लाइक प्रोसीड विद सम सॉर्ट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. बट अगेन मैंने बोला मशीन लर्निंग, मशीन को तो बेसिकली वर्ड समझ में आते नहीं है, उसको सिर्फ नंबर समझ में आते हैं. करेक्ट, तो आपको उस वर्ड्स को या वेक्टर मतलब जो सेंटेंसेस है उनको बेसिकली यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सम सॉर्ट ऑफ वेक्टर्स. आप अगर उनको सक्सेसफुली किसी वेक्टर्स में कन्वर्ट कर पाओगे तो बेसिकली मशीन उसको मैथमेटिकली ऑपरेट कर पाए. से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला आई रन एवरी डे, तो बेसिकली मुझे आई को किसी वेक्टर के मतलब वेक्टर एज इन की मुझे कोई एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. रन को मुझे किसी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड एवरी डे को किसी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर मेरे पास ये तीन न्यूमेरिकल वेक्टर्स अवेलेबल है तो बेसिकली नाउ इट्स अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स, एंड नाउ मशीन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके नाउ आई हैव टू प्रोसीड ऑन दिस वर्ड इन दिस फैशन. ओके, सो जब भी हम लोग को मतलब हम लोगों ने ये स्टॉप वर्ड रिमूवल हो गया, स्टेमिंग हो गया, टोकनाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी. तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू लाइक परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ वेक्टराइजेशन ऑन दिस फीच ऑन दिस वर्ड्स using some embeddings. So word embeddings हो गया. Word embeddings is basically, I will just come to it in the later part. आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर वर्ड इनटू अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट. जैसे मैंने बोला कि आई को मुझे अगर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. सम मेथड्स विल बी लाइक बैग ऑफ वर्ड्स हो गया. इन बैग ऑफ वर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि अगर मेरे पास तीन डिफरेंट सेंटेंसेस है, जैसे आई रन एवरी डे, आई एम ईटिंग अ मैंगो, एंड बेसिकली आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, ऐसा मैंने स्टेटमेंट बोला. तो बेसिकली मेरे पूरे कॉर्पस में आई हैज रिपीटेड 3 नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, सो बेसिकली आई विल क्रिएट अ रिप्रेजेंटेशन इन सच अ वे कि वो मेरे मतलब जो आई की फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करेगा. देन वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक वेक्टराइजेशन टेक्निक विच इज नोन एज TF-IDF, विच इज टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. तो ये सारे बेसिकली ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम लोग किसी भी वर्ड को एक नंबर में कन्वर्ट कर पाते हैं. जब हम लोग उसको नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे तो हम लोग उसको मशीन को दे पाएंगे. मशीन को दे पाएंगे तो मशीन विल ऑपरेट इट इन अ से मैथमेटिकल फैशन. ओके, सो इन ऑर्डर टू सॉल्व NLP प्रॉब्लम्स, मैंने जैसे आपको बोला था दो टाइप्स के सिस्टम्स होते थे, एक रूल बेस्ड सिस्टम होता था और एक स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग सिस्टम होता था. सो रूल बेस्ड सिस्टम किसके बारे में मतलब कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता था, तो रूल बेस्ड सिस्टम यूज टू वर्क विद सॉर्ट ऑफ नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. अभी नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन एक प्रॉब्लम होता है जिसमें आपको एंटिटीज को एक्सट्रैक्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम करेंटली इन मुंबई. सो बेसिकली मुंबई इज एन एंटिटी, इट बेसिकली इंडिकेट्स नेम ऑफ द सिटी. ओके, तो आपको बेसिकली मेरे पास ऐसा बहुत बड़ा कॉर्पस है और मुझे उसमें से सारे सिटीज के नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं. ओके, तो उसके लिए यू कैन जस्ट डिफाइन सम रूल्स. तो रूल्स किसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे, यू विल मेक यूज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग. तो you all guys know like what are parts of speech. So there are different like parts of speech, and आप वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप सिटीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वर्ब्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, नाउन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, प्रोनाउंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड सो ऑन. तो ये बेसिकली बहुत सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम हो गया. इसमें हम लोग कोई भी मतलब एडवांस मशीन लर्निंग वगैरह यूज नहीं कर रहे. वी आर मेकिंग जस्ट यूज ऑफ लाइक सिंपल पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग. ओके, इन द सेकेंड वे वी आर गोइंग टू यूज मशीन लर्निंग. ओके, तो ये मतलब मशीन लर्निंग कहाँ पे पिक्चर में आता है, जहाँ पे मोस्टली वी आर परफॉर्मिंग एनी सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप कोई पॉलिटिशियन ये जानना चाहता है कि मेरे बारे में पब्लिक का ओपिनियन पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो बेसिकली उसके जो एनालिस्ट होंगे या उसने जिन डेटा साइंटिस्ट को हायर किए होंगे वो क्या करेंगे, पूरे डेटा को एक मतलब लोकेशन पे लेके आएंगे.
दे विल परफॉर्म ऑल सॉर्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग स्टेप, जैसे आप स्टॉप वर्ड रिमूवल हो गया, स्टेमिंग लेमेटाइजेशन हो गया, टोकनाइजेशन हो गया एंड सो ऑन. देन दे विल कन्वर्ट इट इनटू सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन. एक बार उसको नंबर्स मतलब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद बेसिकली दे विल मेक यूज ऑफ एल्गोरिथम्स लाइक नाइव हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हो गया, या फिर आपके पास जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, आप उसको यूज करोगे, उस डेटा पे अप्लाई करोगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है या न्यूट्रल है, या यू कैन जस्ट लाइक एनालाइज इन डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फैशन. सो दैट इज समथिंग फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ओके, और आपको अगर कोई टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, जैसे टॉपिक मॉडलिंग करना है, सो मैंने आपको अगर बोल दिया कि मैं आपको एक बड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें से ना बस मेरे को काम की चीजें बता. उस वो जो कस्टमर है ना, उसने बहुत सारा कुछ लिख के रखा है, एंड आई एम नॉट रियली कंसर्न अबाउट व्हाट ही हैज रिटन. आई जस्ट वांट टू नो कि उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं, उसको इस प्रोडक्ट के कॉस्ट से कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसको इस प्रोडक्ट के क्वालिटी से कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये मुझे बता दे. तो बेसिकली उस केस में क्या करूंगा मैं ये सब टेक्स्ट क्लीनिंग करूंगा, एंड देन आई विल बी अप्लाइंग टॉपिक मॉडलिंग टेक्निक्स, जो एक सॉर्ट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही है. तो हम लोग उन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे एंड उनसे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बाहर निकल लेंगे. So what could be important topics? Like topics which are related to quality of the product, which are related to cost of the product. I mean, they are not in our control. हम लोग उनको चूज नहीं कर सकते, but most probably it is expected कि अगर कोई पर्सन रिव्यू लिख रहा है तो मोस्टली विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक थिंग्स लाइक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कलर ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सो ऑन. तो वो सब चीजें जब मल्टीपल टाइम्स ऑकर होंगी तो ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विल बी एबल टू फेच दिस थिंग्स आउट ऑफ द रिव्यू, एंड यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वो पर्टिकुलर रिव्यू उस प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से बात कर रहे हैं. सो दिस इज अनदर वे इन ऑर्डर टू लाइक अप्रोच अ natural language processing problem. But these techniques are pretty much, traditional methods, I would say, or you can just say a little bit old-fashioned methods, जिसमें हम लोग एक बेसिक रूल बेस्ड सिस्टम अप्लाई करते हैं या बेसिक मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं. बट नाउ इफ यू सी, we are living in the world of LLMs. LLMs are nothing but large language models. So basically, they have revolutionized the entire natural language processing industry. And so basically, अभी हम लोग बहुत से advanced techniques का इस्तेमाल करते हैं in order to perform or like work on the same problems, but they are more accurate. They are more like what do you say, explicit. They are more informative in nature and easy to operate as well. So more powerful algorithms are there in the market. So these were the traditional systems, and we will like look at the advanced methods as well. So ये वाले जो स्लाइड में आई डिस्कस समथिंग अबाउट लाइक न्यूमेरिकल कन्वर्जेंस. तो मैंने आपको एक सिंपल मेथड इसके बारे में बताया कि अगर मेरे पास एक आई वर्ड है जो मतलब 3 सेंटेंस में 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक 3,0,0. दैट माइट बी अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. बट दिस इज वेरी वेरी बेसिक स्टाइल ऑफ कन्वर्टिंग एनी टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट. हम लोग के पास एक एडवांस मेथड है विच इज नोन एज एम्बेडिंग्स, and we'll just try to see what are these embeddings and vectorizers. So embeddings एक ऐसी मेथड होती है जिससे आप उस टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल वेक्टर्स पे कन्वर्ट कर दो. नाउ यू विल से कि हाँ, तो उसमें क्या है, आपने जो पहले के मेथड्स बताए उसमें भी तो हम लोग टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर रहे थे. एट द एंड तो हम लोग को वही करना है, राइट? तो इसमें डिफरेंट क्या है, पॉइंट ये है कि एम्बेडिंग्स उस डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि आपका जो सिंटैक्टिकल मीनिंग है या फिर आप सिमेंटिक जो मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपको 4 वर्ड्स दिए, विच इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल, ओके, इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अगर मैंने आपको 4 वर्ड्स दिए, एक किंग दिया, मैन दिया, क्वीन दिया एंड वुमन दिया. नाउ एज अ ह्यूमन, इफ आई एम टेलिंग यू कि बॉस ये 4 जो वर्ड्स है ना, इसमें से मुझे लाइक सिमिलर आइटम्स को यू जस्ट लाइक पुट इनटू सेम ग्रुप्स, तो आप उसको कैसे थिंक करोगे? तो बेसिकली यू विल थिंक कि okay, man and king are similar in nature. They have same gender. They might have a like a deep voice. They might have a beard. They might have some different characteristics which are usually attributed to males. And like if you just form together woman and queen, then they will have some sort of similar characteristics, right? So basically you will say that अगर आप हम लोग से वर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो किंग एंड मैन आर लाइक एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स. आई मीन हम लोग उसके बीच में सिमिलैरिटी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इफ यू जस्ट like form an association between these two words through different contextual understanding, like उसका जेंडर हो गया, उसका बियर्डी लुक हो गया, उसका डीप वॉइस हो गया, तो हम लोग को समझ में आएगा कि मैन एंड किंग आर वेरी मच सिमिलर.
while woman and queen are very much similar. Okay, तो बेसिकली अभी हम लोग को क्या करना है, एम्बेडिंग्स एक ऐसा मॉडल है जो आपके न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से बनाएगा कि आपका मेन का मैन का जो वेक्टर है और किंग का जो वेक्टर है, दोज विल हैव सिमिलर सॉर्ट ऑफ नंबर्स इन देम. सो फॉर एग्जांपल अगर मैन का वेक्टर मैंने ऐसा बना दिया, फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने 3x1 1x3 का वेक्टर बना दिया, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैन का रिप्रेजेंटेशन इज 0.2 0.3 0.5, तो किंग का रिप्रेजेंटेशन आपका कैसे आएगा, 0.21 0.31 एंड 0.51, सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर लाइक दैट. सो नाउ अगर हम लोग को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो डिस्टेंस बहुत कम होगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट. वी बेसिकली वांट टू क्रिएट अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इन सच अ वे कि उन दोनों का सिमेंटिक रिलेशनशिप, जैसे जैसे मैंने बोला मैन एंड किंग आर रिलेटेड थ्रू अ जेंडर. ओके, जेंडर एंड मेल रिलेटेड ऑल सॉर्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो वो रिलेशनशिप अपने को प्रिजर्व करना है. तो बेसिकली एम्बेडिंग्स आर दैट सॉर्ट ऑफ मॉडल जो आपके टेक्स्ट को न्यूमेरिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट तो करेगा, बट वो इस तरीके से कन्वर्ट करेगा कि जो भी सिमिलर लुकिंग वर्ड्स है दे विल हैव सिमिलर लुकिंग रिप्रेजेंटेशंस. तो ये चीज आपको मतलब आगे जाके एनालिसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. ओके, so embeddings is a very interesting, what do you say, it's a very interesting experiment. You can just follow Nitish sir's YouTube channel in order to learn more about embeddings. I'm not very much covering embeddings in depth here, but we have some beautiful content on Nitish sir's YouTube channel where he talks about how Google has created first sort of embeddings, जिसमें it understood कि मतलब दो words का like semantic relationship capture कैसे करना चाहिए. बिकॉज आप बोलोगे कि यार मशीन को कैसे समझेगा कि मैन एंड किंग आर सिमिलर या वुमेन एंड क्वीन आर सिमिलर. ये एज अ ह्यूमन हम लोग को समझा बिकॉज हम लोगों ने एज अ ह्यूमन उसको परसीव किया थ्रू अ जेंडर का नोशन, कि हम लोगों ने देखा कि यार जेंडर थ्रू ये दोनों लिंक्ड है तो हम लोग इन दोनों को सिमिलर माने. बट मशीन के लिए तो सभी मतलब इट्स लाइक उसके लिए सभी चीज सेम ही है, उसको थोड़ी समझ में आता है मैन एंड किंग सिमिलर है या वुमेन एंड क्वीन सिमिलर है. तो बेसिकली देयर इज अ मेथडोलॉजी with which they were able to land up at this particular way of converting your text into vector representation. You will get this video on this sir's channel. You can just have a look at it into depth, and perhaps I mean if you have doubts you can just discuss it in the next session. Okay, so basically embeddings also can be used for dimensionality reduction. देन एम्बेडिंग्स हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं. एक तो हम लोग एम्बेडिंग्स को ऑन द फ्लाई ट्राई कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कोई रेडीमेड कॉर्पसेस है, हम लोग उस पे एम्बेडिंग मॉडल लगा के उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी प्री ट्रेंड एम्बेडिंग्स को यूज कर सकते हैं. अभी कैसे हो गया, जैसे प्री ट्रेंड एम्बेडिंग्स का मतलब क्या होता है कि किसी बड़ी कंपनी ने या किसी बंदे ने पहले से ही उनका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तैयार करके रखा है. ओके, जैसे मैंने आपको बोला मैन एंड किंग का एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से मैंने आपके साथ बात की, तो बेसिकली किसी कंपनी ने वो ऑलरेडी बना के रखा है. ओके, हम लोग को वो सिर्फ एज इट इज यूज करना है. तो उसको यूज करने की टेक्निक को वी विल कॉल इट एज प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स. तो बेसिकली हम लोग एक बड़े से टेक्स्ट में से हम लोग सिमेंटिक रिलेशनशिप्स कैलकुलेट या मतलब कैप्चर करने के लिए हम लोग किसी प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स का यूज करेंगे. तो बहुत ही फेमस प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स अगर हम लोग की बात करने जाएंगे तो वर्ड टू वेक है और ग्लोब है, दोनों भी गूगल ने निकाली है. तो बेसिकली यू विल बी एबल टू सी लाइक दीज आर रियली ब्यूटीफुल एम्बेडिंग्स जो सिमेंटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाती है. तो बेसिकली एक रिपोजिटरी में उन्होंने सारे वर्ड्स का एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन सेव करके रखा है, हम लोग को सिर्फ उसको उठाना है और अपने मतलब एनएलपी टास्क में अप्लाई करना है. ओके, देन आई हैवंट टॉक्ड अबाउट वेक्टराइजर्स इन मतलब डेप्थ इन दिस स्लाइड, बट मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था. तो वेक्टराइजर्स आर नथिंग बट दे आर लाइक बेसिक ऑपरेटर्स हु विल कन्वर्ट टेक्सचुअल डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट. तो बहुत ही बेसिक लेवल के जो वेक्टराइजर्स होते हैं वो काउंट वेक्टराइजर्स होते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो आई की फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट करेगा और उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएगा. टीएफ आईडीएफ एक ऐसा अलग टाइप का वेक्टराइजेशन मेथड होता है जहाँ पे इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत बार आ रहा है तो बेसिकली दैट वर्ड इज रिडंडेंट. Okay, say for example, if someone is writing, for example, he is writing Varun is playing, Varun is hitting, then Varun is sleeping, Varun is studying. Okay, now for example, इस case में is Varun important word? Okay, so it's not practically speaking. Why not? क्योंकि आप वरुण के बारे में ही बात कर रहे हो, एंड इफ यू आर जस्ट इंक्लूडिंग दैट वर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स देन उसका इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू टेल एवरी टाइम कि वरुण ये कर रहा है या वरुण वो कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी मतलब मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है कि लाइक वरुण इज स्लीपिंग, यू कैन जस्ट लाइक यूज ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट.
बट इफ यू आर जस्ट मेंशनिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन बेसिकली उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। तो उसका इंपॉर्टेंस कैप्चर करने का जो मेथड है, दैट इज नोन एज टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो जितना वो ज्यादा टाइम उस डॉक्यूमेंट में अपीयर करेगा वो वर्ड, उसके न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में उसका वेट और कम होता जाएगा। काउंट वेक्टराइजेशन में आपका क्या होता था, वो सिंपली उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करता था कि मेरा आई अगर 4 बार आ रहा है इस डॉक्यूमेंट में, तो मैं उसको 4 टाइम्स लिख दूंगा। बट टीएफ आईडीएफ में एक अलग डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें, कि बेसिकली इट इज एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये एक ही वर्ड अगर बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको 4 इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं रखूंगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को एक सर्टन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से कि वो नंबर कम हो जाए, ताकि मतलब जब मशीन उसको अंडरस्टैंड करने जाए तो उसको समझे कि यार ये जो वर्ड है ना, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, since it has been occurring in all sort of sentence, it is not that important. Okay, so that's how TF-IDF will work. So let me just open the chat and see if you guys are facing any issues. Okay, so yeah, we will just try to answer all this question. Okay, I got your questions, guys. ठीक है, हम लोग इन सबको like आंसर करने का कोशिश करेंगे, like difference between count vectorizer and TF-IDF. Can we combine those? What are word embeddings? I think word embeddings के बारे में मैंने आपको बता दिया. I mean, do you still have doubts? Word embeddings क्या होता है? I told you, right? Like यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वर्ड को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट सिर्फ हम लोग किसी रैंडम नंबर्स के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं जा रहे इस टाइम। हम लोग उसको ऐसे कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका सिमेंटिक मीनिंग इंटैक्ट रहे। जैसे मैंने अगर बोला मैन, किंग, बॉय, या फिर ऐसे कोई भी मतलब मैंने वर्ड्स को लिया, तो उसका बेसिकली एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो सिमिलर होगा, ताकि मशीन उसको जब एनालिसिस करने जाए तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि नो दीस थ्री थिंग्स आर काइंड ऑफ सिमिलर और दे आर काइंड ऑफ सेम ओनली, दे आर यूज्ड फ्रॉम अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, उसको कन्वर्ट तो कर रहे हो न्यूमेरिकल फैशन में, बट यू आर मेकिंग श्योर कि उसका सिमेंटिक मीनिंग जो है दैट विल बी काइंड ऑफ रिटेन्ड। Okay, it will not be dependent on the frequency, it will be dependent on the what do you say, contextual meaning. That's how word embeddings are there. So then there was one more question related to count vectorizers and TF-IDF, which I will like try to cover in the later part of the session. So let's just go to the next slide. हाँ, तो इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोगों ने बात की कि मतलब ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग बेस में हम लोगों ने क्या किया, पूरे डेटा को क्लीन कर दिया, उसको वेक्टराइज कर दिया, एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में बना दिया। एंड देन फिर हम लोग का वो प्रॉब्लम स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम हो गया। जैसे स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग में आपके पास क्या रहता है, आपके पास बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं, कॉलम्स में आपके सारे वैल्यूज रहते हैं, एंड देन यू हैव फाइनल रिस्पॉन्स। लाइक अभी हम लोगों ने उसी स्टेज में अपने एनएलपी प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया। हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को क्लीन किया, स्टॉप वर्ड्स को रिमूव किया, अननेसेसरी सारी चीजों को रिमूव कर दिया। हम लोगों ने हर वर्ड को एक टेक्सचुअल मतलब वे में से न्यूमेरिकल वे में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लोग के पास एक पूरा न्यूमेरिकल टाइप का डेटा अवेलेबल, राइट? तो हमारा वो स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम बन गया, जो हम लोग मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल फीचर के साथ सॉल्व करते हैं वो। ओके, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उस पर, हम लोग बेसिकली मतलब अगर आप लोग पाइथन यूज कर रहे हो तो आप साइकिट लर्न में जाते हो, साइकिट लर्न में जाने के बाद आप उसको इंपोर्ट करते हो पैकेजेस को, एंड देन यू ट्राई टू लाइक फिट एन एल्गोरिथम, जैसे आपने लीनियर रिग्रेशन फिट कर दिया, फिर डिसीजन ट्री फिट कर दिया, आप उसको ट्रेन एंड वाई ट्रेन एक्सटेंड पे मतलब फिट करते हो। यू विल ट्राई टू प्रेडिक्ट इट्स एक्यूरेसी स्कोर ऑन द ट्रेनिंग डेटा एज वेल एज टेस्ट डेटा, एंड देन यू विल ट्राई टू रिपोर्ट इट्स एक्यूरेसी। ओके, इन एनएलपी ये जो हमारे मेट्रिक्स होते हैं, दीज आर लिटिल ट्रिकी। तो बेसिकली एनएलपी में ना क्या होता है, हम लोग के पास किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप मतलब एक्यूरेसी वगैरह रिपोर्ट कर सकते हो। बट अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई लाइक किसी वर्ड का या किसी सेंटेंस का आपको सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी चेक करना है, तो वो आप कैसे चेक करोगे? जैसे मैंने अगर बोला कि से फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग, शी इज कुकिंग एंड क्रिकेट इज अ वंडरफुल गेम, ये 3 मैंने सेंटेंसेस आपके सामने दे दिए। आई एम सो मैंने बोला आई एम प्लेइंग विथ बैट एंड बॉल, ऐसे मैंने बोल दिया। देन आई एम सेइंग कि क्रिकेट इज अ वंडरफुल गेम, एंड मैंने बोल दिया शी इज कुकिंग। नाउ फ्रॉम एन इंट्यूशन कैन यू टेल मी विच ऑफ लाइक आउट ऑफ दीज 3 सेंटेंसेस कौन से 2 सेंटेंसेस एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है? सो लाइक आप अगर सोच पाओगे तो आप ये सोचोगे कि बेसिकली आई एम प्लेइंग लाइक विद बैट एंड बॉल एंड क्रिकेट इज अ वंडरफुल गेम, दीज टू आर बेसिकली सिमिलर इन नेचर,
एंड आपको जो थर्ड वाला सेंटेंस है शी इज कुकिंग, दैट इज लिटिल बिट अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ टॉपिक. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट टू सेंटेंसेस आर रिलेटेड विथ ईच अदर थ्रू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिकेट. करेक्ट? So basically these are similar, these are basically kind of a similar in nature. तो वो similarity हम लोग कैसे calculate करते हैं? Okay, so there are different metrics or methods with which we can calculate similarity. Okay, so there are two types of similarity. एक होती है lexical similarity, एक होती है semantic similarity. Okay, so lexical similarity मतलब basically it will just be related to कि basically वो word एग्जैक्ट उस सेंटेंस के साथ कितना मतलब उसका काइंड ऑफ रिलेशन है. जैसे अगर क्रिकेट एक सेंटेंस में आ रहा है, क्रिकेट दूसरे सेंटेंस में आ रहा है, इट इज बेसिकली काइंड ऑफ ऑकरिंग इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस. तो इट इज लाइक बेसिकली जस्ट टेकिंग द एक्चुअल सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस. अगर वो है तो बोलेगा नहीं क्रिकेट फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी दो सेंटेंस सिमिलर है. दैट इज बेसिकली वेरी रॉ वे ऑफ कैलकुलेटिंग अ सिमिलैरिटी. तो उसमें हम लोग बेसिकली याकार्ड सिमिलैरिटी देख सकते हैं. तो इसमें इसका डेफिनेशन है कि रेशियो ऑफ शेयर्ड वर्ड्स बिटवीन टेक्स्ट कंपेयर टू टोटल यूनिक वर्ड्स. तो मैंने आपको बोल दिया अगर मुझे सेंटेंसेस यूनिक कैलकुलेट करने या फिर वर्ड्स चेक करने की मतलब सिमिलर है या नहीं, तो आई विल बी जस्ट फिजिकली लुकिंग एट ऑल दी वर्ड्स. क्रिकेट इस सेंटेंस में, क्रिकेट उस सेंटेंस में, भाई दोनों सिमिलर है. ओके, तो इसमें हम लोग लाइक डायरेक्टली आई एम जस्ट जंपिंग ऑन टू द वर्ड्स एंड ट्राइंग टू सी कि वो सिमिलर है या नहीं. देन देयर इज अनदर मेट्रिक विच इज नोन एज लेवेंस्टाइन डिस्टेंस. Okay, Levenstein distance basically talks about like minimum number of edits. So what are these edits? This might be insertions, deletions, substitutions in order to transform one text into another. So what does it mean? So for example, अगर मैंने आपको दो words दे दिए, kidding and sitting, okay, and I want to understand कि उसकी similarity क्या है या फिर उसका distance क्या है. Okay, तो मतलब अगर आप इसको फिजिकली देखने जाओगे, किडिंग में बेसिकली स्पेलिंग इज KID KIDDING, and then you are basically you are the other word which is what is what I did swimming, I believe. Okay, तो swimming मैंने बोला था या फिर दूसरा कोई भी आप वर्ड ले लो. सिटिंग बोला था, सॉरी. सो सिटिंग इज बेसिकली SITTING, राइट? तो इस केस में बेसिकली अगर हम लोग फिजिकली इन दोनों को कंपेयर करने जाएंगे तो बेसिकली एट फर्स्ट पोजीशन हियर वी हैव K, देयर वी हैव S, राइट? सो हम लोग के पास अगर हम लोग को मतलब सिटिंग का किडिंग के साथ सिमिलैरिटी चेक करना है तो हम लोग को उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. कौन से ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिटिंग वर्ड को लेंगे. सिटिंग का जो फर्स्ट लेटर है S, उसमें से हम लोग S को हटा के हम लोग K को इंट्रोड्यूस करेंगे. सो दैट इज बेसिकली फर्स्ट एडिट. व्हाट इज दैट फर्स्ट एडिट? इट इज बेसिकली एन इंसर्शन ऑपरेशन. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ S हम लोग K को इंसर्ट कर रहे हैं. एंड इन द सेम वे हम लोग को कुछ अल्फाबेट्स को डिलीट करना पड़ेगा, कुछ अल्फाबेट्स को मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एंड सो ऑन. करेक्ट? तो इस तरीके से जब हम लोग मल्टीपल टाइम्स उसके ऊपर ऑपरेशंस करेंगे तो हमारा फाइनली सिटिंग जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ किडिंग. करेक्ट? तो ये दो वर्ड्स को हम लोग मतलब कितने इटरेशंस में या कितने नंबर ऑफ एडिट्स में, जैसे मैंने इधर बोला किडिंग या एंड सिटिंग. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग इज किडिंग में से के निकाल रहा हूँ, उधर एस इंसर्ट कर रहा हूँ. तो दैट इज फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एन ऑपरेशन. सो नाउ माय वर्ड हैज बिकम सीडिंग. ओके, तो मतलब थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे आई स्टिल हैव DD. नाउ आई हैव टू रिप्लेस दिस DD बाय TT, राइट? तो उसमें और दो ऑपरेशंस लगेंगे. तो फर्स्टली व्हाट आई डिड इज आई रिप्लेस्ड माय लाइक फर्स्ट लेटर, देन आई रिप्लेस थर्ड एंड फोर्थ लेटर. तो इस तरीके से मैंने तीन ऑपरेशंस किए इन ऑर्डर टू मेक सिटिंग लुक एज किडिंग या किडिंग लुक एज सिटिंग. ओके, तो बेसिकली इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया, लेवेंस्टाइन डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 3. सिंस व्हाट आई डिड इज आई लाइक परफॉर्म 3 नंबर ऑफ ऑपरेशंस. लाइक मैंने दो बार इंसर्ट किया, एक बार सब्स्टिट्यूट किया इन ऑर्डर टू लाइक रीच एट दी अनदर वर्ड. So that will basically like will be your Levenstein distance. Okay. Now these kind of similarities will just look at the physical sentence representation. But जैसे मैंने आपको बोला NLP में बहुत बार semantic relationships capturing is more important. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी निकालते हैं. ओके, सो कोसाइन सिमिलैरिटी होता क्या है? सो कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली अगर आप राइट साइड के ग्राफ में देख पाते हो तो उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग जो दो वर्ड्स है ना उसके हम लोगों ने कुछ लाइक रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया. तो जैसे मैंने वर्ल्ड को प्लॉट किया और हेलो को प्लॉट किया. ओके, तो इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग लाइक अगर फॉर एग्जांपल हेलो के लिए मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के 5,1, तो बेसिकली कंसिडर ये जो पॉइंट है मेरा हेलो का दैट इज नथिंग बट योर 5,1.
एंड ये जो वर्ल्ड का पॉइंट है दैट इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ इट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो इट इज ले से एग्जांपल 8,0 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो बेसिकली कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट क्या करता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इट विल ट्राई टू कैलकुलेट। नाउ कैन यू टेल मी कॉस थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन से मतलब एंगल पे आता है? सो इफ यू सी cos थीटा का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है दैट बेसिकली गेट्स जनरेटेड एट द 0 डिग्री का एंगल। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल इट इम्प्लाई अगर मेरे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है? सो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं सॉर्ट, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो वर्ड्स है दीज आर वेरी मच सिमिलर इन नेचर, क्योंकि उनकी एम्बेडिंग्स, उनके बीच का जो एंगल है दैट इट इज मेकिंग इट एज अ 0 डिग्री एंगल, या फिर लाइक वेरी क्लोज टू 0 एंगल। सो दैट विल बेसिकली इंडिकेट दैट आपका जो दो वर्ड्स का सिमिलैरिटी दैट इज एट द हाईएस्ट। बट अगर दो वर्ड एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड विद ईच अदर, ओके, तो उस केस में आपका क्या होगा, ये जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा मतलब उसकी एम्बेडिंग्स इस तरीके से तैयार की मतलब तैयार हो जाएंगी कि आप अगर इनके कोऑर्डिनेट्स को किसी कोऑर्डिनल एक्सिस पे प्लॉट करने जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी कि इन दोनों के बीच का एंगल इज लाइक somehow like it is very close to 90 degree. So basically what does that indicate? That these two words or these two vectors are basically orthogonal to each other. What I mean by orthogonal is they are not at all similar to each other. So अगर हम लोग को किसी मतलब दो वर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटी चेक करनी होती है उनके न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो हम लोग बेसिकली कोसाइन सिमिलैरिटी का यूज करते हैं। ओके, एंड देन देयर इज वन मोर similarity which will try to capture the semantic relationship which is known as word Morse distance. So it will also try to like calculate the semantic distance between words in order to capture the overall meaning similarity. Okay, so cosine similarity is a very important metric. You should always remember कि cosine similarity exact करता क्या है। तो आपके पास कोई न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होगा दो वर्ड्स का, एंड नाउ यू वांट टू चेक कि वो दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है आर दे सिमिलर और नॉट। तो आप उनको प्लॉट करोगे, मतलब नॉट फिजिकली, आई मीन आपको कोसाइन सिमिलैरिटी डायरेक्ट मिल जाती है, बट उसके इंट्यूशन क्या है उसके पीछे का कि वो एक ग्राफ पे प्लॉट की जाएंगी, फिर उसके बीच का जो एंगल है यू विल बी असेसिंग दैट एंगल। अगर वो एंगल इज विच इज लाइक वेरी क्लोज टू 90 डिग्रीज, तो आपका जो सिमिलैरिटी स्कोर है दैट विल बी काइंड ऑफ वेरी मच क्लोज टू 0। And if the angle is like it is overlapping to each other, then you will basically say that these two words are very much similar in nature. Okay, so in order to understand कि दो आपके जो numerical representations है they are similar or not, you will make use of cosine similarity. And if you want to just take the physical like similarity और just आपको उन words को देख के check करना है कि वो similar है या नहीं, तो उस केस में आप याकार्ड इंडेक्स या याकार्ड सिमिलैरिटी के साथ जा सकते हो, लेवेंस्टाइन डिस्टेंस के साथ जा सकते हो। Okay, so we'll just talk about some important like neural network now. So which is nothing but अभी हम लोग थोड़ा डीप लर्निंग को टच करेंगे। हम लोगों ने बेसिक मशीन लर्निंग के बारे में देख लिया कि बेसिक मशीन लर्निंग एनएलपी में कैसे इंकॉर्पोरेट किया जाता है। नाउ विल ट्राई टू सी like which are the deep learning approaches which which are incorporated in the natural language processing. Okay, तो उसमें से एक अप्रोच तो ये हो गया कि हम लोग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे। Okay, so any neural network which you are using in any sort of computer vision or NLP is like a base. It is basically based on a base which is of artificial neural network. Okay, तो एक artificial neural network में आपके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हिडन लेयर्स होते हैं, फिर आपके पास बहुत सारे वेट्स होते हैं, बायसेस होते हैं जिसको आपको बेसिकली ट्यून करना पड़ता है। सो फॉर द पीपल हु डोंट नो और हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली अ न्यूरल नेटवर्क, तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिज्म व्हिच विल ट्राई टू मिमिक अवर ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो एज अ ह्यूमन हम लोग किसी भी से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रियल लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेते हैं, तो हम लोग वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, राइट? वी विल ट्राई टू इवेलुएट मल्टीपल थिंग्स एसोसिएटेड विद दैट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आज ऑफिस जाना है या नहीं जाना, ओके, तो मेरे जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट जो व्हाट इज कनेक्शन है दे विल स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड। उसमें बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, मतलब लाइक बेसिकली देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिग्नल फ्लोइंग थ्रू इट। इट विल जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि ओके ऑफिस जाना चाहिए, उसके लिए कौन से फैक्टर्स है कि मतलब मेरा बॉस डांटेगा या मेरे पास लीव्स है या नहीं, या फिर आज कोई प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल है या नहीं। सो बेसिकली आई विल हैव डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स which will be associated in my brain, एंड उसके साथ मेरा एक कनेक्शन, मतलब आई विल ट्राई टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, एंड ऑन लाइक आफ्टर वेइंग माय प्रोज एंड कॉन्स आई विल मेक अ डिसीजन कि मुझे आज ये डिसीजन लेना है या मतलब ये ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, करेक्ट? तो न्यूरल नेटवर्क जो होता है, मशीन को हम लोग बेसिकली सेम चीज बताने की कोशिश करते हैं
कि बॉस ह्यूमन जो होता है ना वो इस तरीके से सोचता है, वो मल्टीपल चीजों को लिंक करता है, मल्टीपल फैक्टर्स को सोचता है, मल्टीपल कनेक्शंस बिल्ड करता है, एंड देन ही बेसिकली ही और शी इज एबल टू रीच एट द डिसीजन। अभी तू भी ऐसा सोचना शुरू कर दे। ओके, वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जो है ना वो सारे अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे। ओके, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपके इनपुट लेयर हो गया, हिडन लेयर हो गया, वेट्स हो गया, बायसेस हो गया, एंड सो ऑन। ओके, सो दैट बेसिकली फॉर्म्स अ बेसिक न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी आप बोल सकते हो। जो एनएलपी में हम लोग एक्सप्लिसिटली यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ओके, नाउ आप बोलोगे कि अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अच्छे से काम कर रहा था तो ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क देखने की क्या जरूरत? जरूरत इसलिए होती है क्योंकि एनएलपी में जब भी आप किसी टेक्स्ट को एनालिसिस करने जाते हो, तब इट्स नॉट जस्ट कि उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है, उसका सीक्वेंस भी मैटर करता है। ओके, सो बेसिकली लाइक मैंने अगर बोला कि यू आर टायर्ड, एंड मैंने दूसरा सेंटेंस बोला आर यू टायर्ड। ओके, अभी अगर आप इसको सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी, क्योंकि वर्ड्स तो दोनों में सेम ही है। बट अगर आप देखोगे दोनों का सीक्वेंस अलग है। फर्स्ट इज आई एम जस्ट मेकिंग एन एजर्शन बाय सेइंग दैट यू आर टायर्ड। ओके, सेकेंड में आई एम सेइंग आर यू टायर्ड, सो आई एम यूजिंग आर एट द फर्स्ट प्लेस। सो बेसिकली वो क्या होता है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन। नाउ एज अ ह्यूमन, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि पहला वाला स्टेटमेंट था, दूसरा वाला क्वेश्चन था? क्योंकि हम लोग को बचपन में सिखाया गया था बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि अगर ये मतलब इस पोजीशन में ऑकर होएगा, ये सब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे ऑकर होएगा, ये वर्ब अगर इस पोजीशन पे ऑकर होगा, या ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे ऑकर होगा, तो दैट विल बी एट्रीब्यूटेड टू अ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इन दिस फॉर्मेट इफ इट इज अरेंज्ड देन इट विल बी कॉल्ड एज अ क्वेश्चन मार्क, इफ इट इज अरेंज्ड इन दिस फॉर्मेट इट विल बी कॉल्ड एज एन असर्शन। करेक्ट? तो बेसिकली हम लोग को मशीन को भी यही बताना है कि बॉस ये जो पूरा एनालिसिस है ना उसमें सीक्वेंस भी मैटर करेगा। ओके, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है आपका, दैट विल नॉट टेक लाइक सीक्वेंस इनटू कंसिडरेशन। सो हम लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में एक थोड़ा सा एडिशन कर दिया, नॉट हम लोगों ने, मतलब जिसने भी डेवलप किया था ये, इसमें ही डिड सम एडिशन। इसने वो प्रोविजन कर दिया कि हम लोग ना उस न्यूरल नेटवर्क में सीक्वेंस भी ऐड करते जाए। तो सीक्वेंस ऐड करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली हर टाइम स्टैम्प पे हम लोग वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करते जाए, और वो जब नेक्स्ट मतलब जैसे मैं अगर उस सेंटेंस को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इनपुट दूंगा अपने न्यूरल नेटवर्क को। से फॉर एग्जांपल यू आर टायर्ड, मैंने यू का रिप्रेजेंटेशन मशीन के अंदर भेजा, आर का रिप्रेजेंटेशन अंदर भेजा, टायर्ड का जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इनपुट करके एल्गोरिथम के अंदर भेजा। ओके, सो बेसिकली व्हाट विल इट विल ट्राई टू डू इज, जब मैंने यू का रिप्रेजेंटेशन व्हेन आई ट्राइड पासिंग थ्रू अ न्यूरल नेटवर्क, इट विल ट्राई टू लाइक स्टोर सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट। जब मैं आर का इंफॉर्मेशन उसमें पास करूंगा तो वो प्रीवियस स्टेट का जो इंफॉर्मेशन था, दैट इज इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द यू, इट विल ट्राई टू incorporate that information, and it will like come up with a new set of what do you say weights and biases, not weights and biases, it's some set of operation which will try to retain some information from the previous sequence. Okay, so in this way it will try to accommodate sequence of the what do you say input. Okay, सो इस केस में अगर आप मैंने आर को फर्स्ट पास किया है, यू को बाद में पास किया है, तो इट विल ट्राई टू प्रोसेस दैट ऑपरेशन इन दैट वे। अगर मैं यू को फर्स्ट पास कर रहा हूँ, आर को सेकंड पास कर रहा हूँ, तो इट विल ट्राई टू टेक इनटू कंसिडरेशन सीक्वेंस ऑफ द इनपुट। ओके, सो अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इज अ फंडामेंटल डायग्राम ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें हम लोग का क्या होता है कि हम लोग जब इनपुट पास करते हैं, along with that we'll try to pass on some sort of what do you say information which we got from the previous what do you say input. Okay, that is being passed to the neural network, and उस तरीके से वो अपना सीक्वेंस रिमेंबर कर पाता है, which artificial neural network was not able to remember. Okay, so we will just try to touch upon it in a very short fashion. I'm not going into deep architecture of recurrent neural network. You can just find all these details on the channel. Since our course is mostly directed to RAGs, we'll try to just cover upon just basic introduction of NLP, and we'll try to cover all sort of basic NLP operations or operators, so that we can just move on to RAGs with a efficient understanding of NLP. सो आरएनएन बेसिकली सीक्वेंशियल डेटा के लिए यूज होते हैं, फिर वो टेक्स्ट हो गया, स्पीच हो गया, टाइम सीरीज हो गया, कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करते हैं। इट्स नॉट जस्ट आप उसका रिप्रेजेंटेशन अंदर डाल दोगे, इट इज नॉट गोइंग टू कम आउट एज एन इफिशिएंट आउटपुट, आपको उसका सीक्वेंस मैटर करेगा। ओके, सो unlike traditional neural networks, RNNs have this internal memory that allows them to process information from previous inputs,
एंड जब भी हम लोग कोई बड़ा मतलब टेक्स्ट को वी आर ट्राइंग टू पास इट एज एन इनपुट, इट विल ट्राई टू लाइक इवन अंडरस्टैंड इट्स लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। जैसे मैंने बहुत बड़ा सेंटेंस पास कर दिया, जब मैं लास्ट वर्ड उस सेंटेंस का पास कर रहा हूँ, स्टिल एट दैट पॉइंट एज वेल इट इज एबल टू अंडरस्टैंड लाइक फर्स्ट जो वर्ड मैंने पास किया था उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा था, दैट इट विल बी एबल टू कैप्चर। ओके, सो इट विल बी एबल टू कैप्चर द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज विद इन द सीक्वेंस। सो सीक्वेंस का आपका जो फ्लो है दैट इज बेसिकली गेटिंग रिटेन। एंड ये बेसिकली उस केसेस में यूज होता है जहां पे आप मशीन ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हो या स्पीच रिकॉग्निशन करने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला, ट्रांसलेशन सॉर्ट ऑफ जो भी आपके काम होते हैं उसमें आपका सीक्वेंस मैटर करता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में लाइक यू कांट जस्ट ट्रांसलेट ईच वर्ड टू दी लाइक अदर वर्ड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, यू विल आल्सो हैव टू इनकॉर्पोरेट सीक्वेंस। देन वो क्वेश्चन का क्वेश्चन में ट्रांसलेशन कर पाओगे, एसर्शन का एसर्शन में ट्रांसलेशन कर पाओगे, एंड सो ऑन। करेक्ट। तो ये जो सीक्वेंस वाली जहां जहां पे भी डिपेंडेंसी होती है, जैसे आपने बात करते समय सीक्वेंस मैटर करते हैं वर्ड्स का, टेक्स्ट while writing sequence matters, right? For all these operations or all these problem solving, we will be making use of recurrent neural networks. So this is basically a fundamental algorithm जिसपे NLP का फाउंडेशन मतलब बिल्ड होता है। बेसिकली RNN इज एट द बॉटम। उसके बाद फिर हम लोग थोड़े एडवांस मॉडल्स के पास जाएंगे, जैसे LSTM हो गया। उसके बाद विल लुक एट ट्रांसफॉर्मर, एंड देन वी विल कम टू द बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एंड फिर हम लोग रैक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। So हम लोग बेसिकली बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग वी आर ट्राइंग टू जस्ट लुक एट व्हाट इट इज बेस। हम लोग फिर आगे आगे धीरे धीरे उसको मतलब आगे के ऑपरेशन से आगे के एल्गोरिथम्स, एडवांस एल्गोरिथम्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आरएनएन हो गया, दैट वाज द बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक जिसमें आप किसी भी लाइक एनएलपी प्रॉब्लम को जहां पे सीक्वेंस मैटर करता है, यू आर एबल टू सॉल्व। जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब अभी आप बोलोगे कि ठीक है, फिर आरएनएन सीक्वेंस कैप्चर कर पा रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, तो अभी मतलब आगे के एल्गोरिदम के पास जाने की जरूरत क्या है प्रैक्टिकली स्पीकिंग? आरएनएन वाज द बेस्ट, राइट? बट आरएनएन हैज फ्यू लिमिटेशंस। जैसे मैंने आपको बोला, आरएनएन एक्चुअली बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज कैप्चर कर पाता है। तो उस केस में व्हाट हैपेंस इज, समटाइम्स इट माइट एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट्स और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। ओके, तो जब ये बेसिकली मतलब vanishing gradients and exploding gradients is basically another term which is used when you are estimating the hyperparameters of any neural network। कि जैसे आप वेट्स बायसेस जो होते हैं आपकी किसी भी न्यूरल नेटवर्क के, आपको अगर उनको एस्टिमेट करना है, तो उस एस्टिमेशन के टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, सिंस आरएनएन इज लाइक काइंड ऑफ taking into consideration long term information which was passed long term back, right? तो उस केस में कभी कभी आपके ग्रेडियंट्स एक्सप्लोड हो सकते हैं या फिर आपके ग्रेडियंट्स वैनिश भी हो सकते हैं। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो आप आरएनएन के साथ फेस करते हो। तो मोस्ट कभी कभी वो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन भी उसके साथ रिटेन कर लेता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो उस केस को ओवरकम करने के लिए लाइक साइंटिस्ट हैड फाउंड वन मोर न्यूरल नेटवर्क विच इज नोन एज LSTM, which is stands for long short term memory network। तो ये बेसिकली एक आरएनएन का एडवांस वर्जन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी हैव मल्टीपल गेट्स। ओके, सो बेसिकली हियर इन दिस diagram you are able to see that this is forget gate, this is input gate, and then there is output gate, there is a memory gate। so there are different sort of gates जहाँ पे आपको मतलब आप क्या करते हो इस केस में, यू आर नॉट ट्राइंग टू रिटेन द एंटायर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। आरएनएन में आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग सीक्वेंस का सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन, माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन, यू आर ट्राइंग टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट इनपुट, since sequence was important। Sequence is still important, but the point is not every information out of that sequence is important, right? So what will happen in case of long short-term memory neural network is, in the case of LSTM, you will have different gates, like forget gate हो गया, input gate हो गया, reset gate हो गया। तो उस हर गेट में क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन काम की है वो इंफॉर्मेशन आगे के लेयर में पास की जाएगी। द इंफॉर्मेशन विच इज रिडंडेंट, दैट विल बी काइंड ऑफ फॉरगॉटन। सो आपके पास अगर कोई रिडंडेंट इंफॉर्मेशन या रिडंडेंट इनपुट है, दैट इनपुट will be forgotten from your memory, and only relevant input or only relevant memory will be passed on to the next stage। So LSTM is another sort of a neural network
जो RNN का एक सम सॉर्ट ऑफ एनहांसमेंट है, सम सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे इट विल लाइक ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, बट वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी इंजेस्ट करते समय वो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट है उसको फॉरगेट कर देता है, इन्फॉर्मेशन को रीसेट कर देता है, एंड इट विल ट्राई टू डिसाइड कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को आगे भेजना है, सो दैट मतलब हम लोग विल नॉट लेफ्ट विथ सम सॉर्ट ऑफ अननेसेसरी रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो दैट इज एड ऑन RNN। सो नाउ यू अंडरस्टैंड। सो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? हम लोगों ने सबसे बेसिकली रूल बेस्ड मशीन, मतलब रूल बेस्ड टेक्निक से स्टार्ट किया था। देन वी केम टू द मशीन लर्निंग मेथड्स, देन नाउ वी आर टचिंग अपॉन द डीप लर्निंग मेथड्स। डीप लर्निंग में हम लोगों ने सबसे पहले वी स्टार्टेड विथ RNNs, which were kind of very much capable in order to understand the sequential information. उसके बाद now we are touching upon the LSTM. So basically जैसे मैंने आपको बोला था, LSTM have this gated cell structures, जिसमें आप इनपुट देते हो, उसके साथ आपके पास मतलब डिफरेंट डिफरेंट गेट्स होते हैं, फॉरगेट गेट होता है, रिसेट गेट होता है, एंड देन इट बेसिकली कंट्रोल्स कि आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन रिटेन करना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना है, कौन सा इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, सो ऑन। ओके, सो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म सीक्वेंस डिपेंडेंसी या फिर लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस होते हैं, लॉन्ग लाइक बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है, कौन सी फॉरगेट करनी है, that LSTM will be able to like capture it in a very useful fashion. Okay, so basically यहाँ पे वही लिखा है, forget gate decides what information to be discarded from the same state of the previous timestamp। तो previous जो आप सीक्वेंस से इंफॉर्मेशन कैरी करते आ रहे हो, उसमें कौन सा इंफॉर्मेशन रिमूव करना है जो रिडंडेंट है, that forget gate will decide। इनपुट गेट विल बेसिकली डिसाइड दैट न्यू इंफॉर्मेशन कौन सी स्टोर करनी है, एंड आउटपुट गेट आपका बेसिकली डिसाइड करता है कि फाइनली आपको कौन सी इंफॉर्मेशन propagate करनी है। Okay, so this is all about LSTM. So let's just look at the chat section for a little. Okay. Okay. So yeah, I could see that for text classification similarities taken into account. Okay. I will just like note down all these questions. हम लोग इसको लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। I just want to know from someone कि अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर आपको LSTM नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको RNN नहीं समझा, या फिर अभी तक मैंने जो भी बोला आपको कुछ भी नहीं समझा, जो भी आपके ओपिनियंस है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ जो मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर उसमें से आपको कुछ समझ नहीं रहा है, देन प्लीज टेल मी। आई विल जस्ट टेक ऑल दिस डाउट्स इन लाइक इन द लास्ट 10 minutes। बट इफ यू आर काइंड ऑफ नॉट श्योर विथ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और आपके पास अगर वो इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं हो रही, तो प्लीज लेट मी नो, तो मैं इस मतलब टॉपिक को फिर से एक बार रीइटरेट करूंगा लाइक बिफोर गोइंग। ओके, सो इफ यू हैव एनी इश्यूज लाइक जस्ट टाइप इन द चैट। अगर मेरा स्पीड बहुत फास्ट है, अच्छा, ओके, आई विल जस्ट शेयर दिस लिंक्डइन आईडी, नो इश्यूज। currently at this point of time just tell me कि आपको मतलब ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ, आई विल जस्ट शेयर दिस डॉक्यूमेंट, डोंट वरी। तो जस्ट टेल मी कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है ना, अगर आपको कोई स्पीड के साथ इश्यू आ रहा है, या फिर यू आर फीलिंग कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि LSTM क्या होता है या RNN क्या होता है। ओके, okay, speed slow, fine, I will do that, no issues। Yeah, so basically you are correct। I have this pen and what do you say, pad ready with me। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि अगर मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते बैठा ना, तो आई विल हैव टू, आई मीन बेसिकली आई हैव टू कवर अ लॉट ऑफ इन NLP। तो अगर मैं उसको बहुत डिटेल में कवर करते बैठा ना, तो मतलब अपना ये रैक्स का कोर्स बाकी मतलब बाजू में रह जाएगा, एंड विल बी जस्ट कीप ऑन डिस्कसिंग NLP ओनली। सो फॉर दैट रीजन ओनली आई एम नॉट लाइक mentioning or not showing you demonstration of all these particular concepts। I am just covering them from an overview perspective। आप नीतीश सर के चैनल पे इसको देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अगर फिर भी आपके पास डाउट है, तो आई विल जस्ट कम अप विद सम मटेरियल, जहाँ पे मैंने मतलब ये इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करके रखे हैं। आई कैन जस्ट शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद यू इन ऑर्डर टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ दिस थिंग्स बेसिकली वर्क इन रियलिटी। बट करेंटली आई एम नॉट टचिंग अपॉन इट। या श्योर। सो बेसिकली हम लोग आज के दिन LLM और रैक्स पे मतलब रैक्स पे बात नहीं करेंगे। आज के दिन हम लोग सिर्फ NLP एंड LLM के बारे में बात करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स विल बी कवरिंग रैक्स। सिंस अगर मैं डायरेक्ट रैक्स पे जंप कर रहा हूँ, एंड किसी मतलब किसी ऑडियंस को अगर NLP का इतना आइडिया नहीं है, या इफ दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट LSTM और RNNs, देन दे विल फेस दैट इशू कि उनको आगे की चीजें कुछ समझ में ही नहीं आएंगी। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर हो।
अगर इफ यू फील कि इसके बाद भी मेरा कुछ बच रहा है तो हम लोग इसको और एक सेशन में विल ट्राई टू कवर मोर ऑन रैक्स, बट मेक श्योर कि मैंने सिलेबस को डिजाइन करके रखा है, नथिंग विल बी लेफ्ट. सो बी एश्योर्ड कि आज के सेशन में इवन दो वी आर कवरिंग द इंट्रोडक्शन, still we will be able to cover rags in depth. So don't worry about that. Okay. So I'm just closing the chat for the moment, and we'll open it like once we cover the next concepts. So I hope that आप सब लोग at least ये सब चीजों से तो clear हो, right? Okay. So let's get started with the main business, which is introduction to LLM. Okay. So ये एक इमेज है जो मैंने इंटरनेट से उठाया था. सो दिस टॉक्स अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. तो अगर आप ये मतलब सोचते हो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो भाई वो चैट जीपीटी ने 2022 में जब निकाला था, 22 से 23 में, तभी से वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हाइप में है, क्योंकि जेने है तो लाइक इट इज इन हाइप सिंस लास्ट 1 and 2 years, राइट? बट आप लोग ऐसा सोचते हो तो शायद आप गलत हो, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन स्टोन है दैट हैज बीन लेड बैक very long in time. So you can just see like it, the history starts from 1966. Now it is really hard to believe कि उस time पे I mean you had like, even I mean you did not have like pretty much good access to the competition machines. तो ये तब से large language models की बात कहाँ से कर रहे हैं? So it is a shocking fact, but the point is this all started with Turing's experiment. If you are not aware about it, you can just read about it. So he just gave like an idea to world that we can just incorporate this large language models, where these models will be capable of understanding all sort of language nuances. And these developments started way back from there. Although they were not as powerful as ChatGPT, again, ChatGPT या फिर आपके जो भी गूगल के मॉडल्स या फिर अमेजोन के मॉडल्स है, उतने पावरफुल डेफिनेटली नहीं थे वो. बट the foundation stone was laid back like way back in the time since 1950s. I'm not going in that era. So if you just want to have a very rough look at it, so 1966 से चीजें start हुई है in the ELIZA experiment, and then like late 1980s से 1990s basically statistical language models आ गए. फिर you have neural probabilistic language models आ गए. And then फिर 2000 से लेके 2019 तक I mean most probably people were relying more on the neural network approaches, जिसमें हम लोगों ने RNN की बात की, LSTM की बात की, transformers basically I mean were into the picture. So अगर आप देखोगे 2000 से 2019 तक I mean they are just making use of the traditional model, not traditional deep learning models, जो Word2Vec हो गया, फिर transformer models हो गया, फिर BERT हो गया, which was again founded by Google. And then 2019 में basically OpenAI started coming up with all sort of GPT updates. तो GPT-2 and T5 they launched, and then 2020 में GPT-3 आ गया. Then Jan 21 October 22 में ये सारे मतलब मॉडल्स आ गए which are really useful. अगर आपने पाम यूज किया होगा, XLarge यूज किया होगा, लैम्बडा यूज किया होगा, these are really powerful models. And then actually जो सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू था वो आया नवंबर 2022 में इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड. ओके, आई मीन ये बर्ट वगैरह तो बहुत टाइम से यूज कर रहे थे लोग मॉडल्स, but still it was like just applicable for the people who were explicitly working in the data science industry. Okay, so language capabilities or language model capabilities were not familiar to the what do you say common world. जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी came into picture, okay, and it entirely revolutionized the entire what do you say language models का industry. So there were many new jobs being created, and now onwards, I mean, after November 2022, you might have seen that आपका जो day to day जो working methodology हो गया वो बहुत ज़्यादा change हो गया है. Now you are basically looking at different concepts. You have like I don't even use term like googling. I now talk about कि यार चैट जीपीटी कर लेना. सो बेसिकली वो जो गूगलिंग पहले से होता था कि यार गूगल कर लेना, उसके अलावा नाउ इट हैज गॉट रिप्लेस्ड विद चैट जीपीटी कर लेना. व्हाई? बिकॉज चैट जीपीटी कैन गिव यू प्रिसाइज आंसर्स टू योर एग्जैक्ट क्वेरीज. अगर आप गूगल करने जाते हो तो आपको फिर वो मतलब बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक सर्च करना पड़ता है. इवन लाइक गूगल सर्च इज काइंड ऑफ एन आर्ट, राइट? बट चैट जीपीटी हैज शोन टू द वर्ल्ड कि एक ऐसा इंटरफेस उन्होंने ओपन एआई ने बनाया जिस इंटरफेस का यूज करके basically they were able to like
like just that model was so useful to a layman. It has nothing to do with a sort of a data scientist. वो मॉडल डेटा साइंटिस्ट के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना किसी मतलब नॉन टेक पर्सन के लिए. कोई नॉर्मल बंदा भी उसको यूज कर सकता है एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन. ओके. सो मतलब ये जब मॉडल लॉन्च हुआ था, दैट मॉडल वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू. बट उसमें एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम था जो उस टाइम पे भी लोग डिस्कस कर रहे थे कि इट वाज ट्रेन्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कॉर्पस विच वाज लाइक प्रायर 2022. ओके. सो मतलब वो एक ओल्ड डेटा सेट पे उन्होंने ट्रेन करके रखा था उस मॉडल को. एंड जब भी लोग उस पे कोई ऐसे नया मतलब करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन पूछते थे तो इट यूज टू गिव यू एन आंसर लाइक कि मेरे को नहीं पता, एज एन लैंग्वेज मॉडल आई वाज ट्रेन्ड ऑन द कॉर्पस टिल दिस डेट एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू लाइक कम अप विद आंसर फॉर द करंट इवेंट अफेयर विच यू आर आस्किंग अबाउट. जैसे किसी ने अगर पूछ लिया कि ट्विटर का सीईओ 2021 में कौन था, 22 में कौन था, 23 में कौन होगा मतलब था. सो उस केस में इट वाज नॉट एबल टू आंसर एनीथिंग लाइक आफ्टर 2021 since it was trained on a static corpus of data. Yeah, that was the issue which they faced, but it was still kind of a breakthrough. Okay, then तो मतलब आपके पास बहुत सारे मॉडल्स आना शुरू हो गए. फिर वो मतलब एक सॉर्ट ऑफ इट वाज काइंड ऑफ अ एलएलएम रेस. तो मतलब सारी बड़ी जो मैंग कंपनीज है, बड़ी बड़ी मतलब टेक कंपनीज है, दे गॉट इनटू दिस. एंड फिर माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई कोलैबोरेटेड, देन गूगल केम विद ओन मॉडल्स लाइक जेमिनी हो गया. Then now they have like started with Gemma and all the other advanced models. Amazon आ गया उस रेस में and Amazon like developed some advanced models. फिर मतलब बहुत सारे अदर प्लेयर्स आ गए जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स इस रेस में उतार दिए which were kind of considered to be a competitor for ChatGPT, but still ChatGPT, I mean, from my experience, I could see that ChatGPT still it's kind of an untouchable. If you just talk from a it's serving to a layman. अगर मतलब मैं मेरे फादर को या मदर को ऐसा कोई ऐप यूज करने दूंगा तो इंस्टेड ऑफ लाइक Gemini या अदर chat API interfaces, I would definitely like them to use ChatGPT since it's a very simple to use and it is kind of uh, I mean, it is more comprehensive in nature. Its training corpus is really good. बट उसमें एक इशू था कि वो एक स्टैटिक मतलब कॉर्पस पे ट्रेन किया गया था. सो दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ लिमिटेशन. और वही लिमिटेशन क्या सॉल्व करते हैं, रैक्स सॉल्व करते हैं. तो यही हमारे कोर्स का पूरा फंडामेंटल है कि जो मतलब जो मॉडल्स ऐसे थे जो एक स्टैटिक कॉर्पस पे ट्रेन करके रखे थे उन लोगों ने, तो वो बेसिकली न्यू इन्फॉर्मेशन को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे. बट अभी हम लोग रियल टाइम वर्ल्ड में काम कर रहे हैं. अगर मैं कोई मतलब कोडिंग कर रहा हूँ किसी पाइथन पे एंड आई एम मेकिंग यूज ऑफ एडवांस लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरीज में तो चेंज होते रहते हैं. पांडास का कोई फंक्शन कल डिप्रिशिएट हो जाएगा और नया फंक्शन आ जाएगा. तो उस केस में अगर वो मॉडल किसी स्टैटिक डेटा सेट पे या फिर स्टैटिक कॉर्पस पे ट्रेन किया गया है तो वो मुझे गलत कोड देगा. तो इट इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर मी, राइट. अगर मैं इसको किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए यूज करना चाहूंगा, अगेन इट इज नॉट ऑफ मच यूज क्योंकि उस फील्ड के जो चेंजेस है दे आर लेटेस्ट इन नेचर, बट मॉडल तो किसी पुराने डॉक्यूमेंट पे ट्रेन हुआ था. ओके. सो दैट वाज द इशू एंड वही इशू को रैक सॉल्व करता है. हम लोग का पूरा कोर्स का फंडामेंटल आइडिया वही है कि हम लोग ऐसे स्टैटिक जो मॉडल्स है जिनको पहले से ट्रेन करके रखा है, हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट रैग्स इनटू इट. सो नाउ अगर आप देखोगे तो बेसिकली लाइक OpenAI हैज कम अप विद GPT-4o which is their latest model जो अभी उन्होंने recently launch किया था. And that model is basically has this browse in वाला function. So again it has like sort of solved this kind of a limitation जो आपके सबसे पहले वाले chat GPT में था कि it was trained on the basic corpus और वो उसके पास रियल लाइफ मतलब जो रियल लाइफ या डे टू डे लाइव इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं था. वो प्रॉब्लम उन लोगों ने एक हद तक सॉल्व कर लिया है बिकॉज उन्होंने जो अभी GPT-4o जो मॉडल निकाला है उसमें उन्होंने वो ब्राउजिंग का एक्सेस दे दिया है. ओके. सो विल ट्राई टू सी कि कोई भी मॉडल को हम लोग रैक्स के थ्रू उसको कैसे एक न्यू इंफॉर्मेशन बेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. दैट इज पर्पस ऑफ आवर कोर्स. ओके. फिर टॉकिंग अबाउट जस्ट हिस्ट्री, सो चैट जीपीटी आ गया, फिर वेब जीपीटी आ गया, बार्ड आ गया, लामा आ गया, फिर लामा 2 आ गया, अभी रिसेंटली लामा 3 आ गया था. मार्च 23 में दे लॉन्च GPT-4, देन अप्रैल सॉरी इट्स लाइक हाँ इट्स लाइक दिस. सो देयर इज ब्लूमबर्ग जीपीटी. फिर हम मतलब हर इंडस्ट्री ने मतलब फिर बड़े बड़े कंपनीज हो गए जैसे जेपी मॉर्गन चेज हो गया, फिर मतलब और अलग अलग कंपनीज ने उनने अपने अपने मतलब एलएलएम्स निकालना शुरू कर दिया. व्हाट दे डिड इज दे मेड यूज ऑफ अ बेसिक चैट जीपीटी या फिर कोई भी ऐसे जीपीटी मॉडल का उन्होंने इस्तेमाल किया. उन्होंने उसको एक अपने सॉर्ट ऑफ कॉर्पस पे दी काइंड ऑफ ट्रेन्ड एंड फाइन ट्यून्ड इट
एंड दे स्टार्टेड लाइक, आपने फिर बहुत सारे जीपीटीज देखे होंगे, जैसे मैंने गीता जीपीटी देखा था, विच विल बी एबल टू अंडर लाइक आंसर ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उसको पूछते हो तो इट विल बी एबल टू टेल यू लाइक थिंग्स अराउंड दैट। फिर मतलब फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारे जीपीटीज आ गए थे कि आपको अगर कोई फाइनेंस के रिलेटेड क्वेरी होगा तो इट इज एक्सप्लिसिटली ट्रेन्ड ऑन द फाइनेंस डोमेन। ऐसे बहुत सारे जीपीटी मॉडल्स फिर कंपनीज ने या फिर लोगों ने ट्रेन करना शुरू कर दिए। And then, I mean, this diagram usually consists the information still palm 2, but currently we have GPT-4o, which is latest in the market, and Llama 3, which is again latest in the market. And these are basically very, very powerful large language models. So just if we talk about the history in very short, then they have a very rich history. And early models start coming from 1950s. So ये basically 1947 में ट्यूरिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ही stated this to the world कि I mean we can just incorporate this information through language models. And but तब से 2010-15 तक चीजें इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, मतलब बहुत स्लो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। द रीजन वाज देयर वाज नो enough infrastructure available in order to develop anything. But what happened is after that, after 2010-15 के बाद जब attention mechanism पिक्चर में आया, ट्रांसफॉर्म मॉडल्स पिक्चर में आए, then basically ये सारे एडवांस जो जीपीटी मॉडल्स है, they started coming into picture. Okay, so LLMs are basically defined as AI systems which are trained on massive amounts of text data, and LLMs can understand and generate human like language. So इसका मेन पर्पस होता है कि आप उसको कोई भी टेक्स्ट दो, क्वेश्चन दो, वो उसको आप रिलेटेड आपका मतलब टेक्स्ट जनरेट करके देगा। इट माइट क्रिएट लाइक आर्टिकल, इट माइट क्रिएट अ सिंपल आंसर फॉर दैट क्वेश्चन एंड सो ऑन। ओके, एंड ये बहुत एडवांस मॉडल्स है, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी वो कैच कर लेता है, जीरो शॉट लर्निंग, मतलब न्यूअर टास्क पे इट इज एबल टू कैप्चर। देन अगर आप कोई स्पेसिफिक डोमेन के रिलेटेड आप उसको ट्रेन करना चाहते हो तो वो भी कर सकता है। सो बेसिकली परफॉर्मिंग जीरो शॉट लर्निंग एज इन की आप उसको मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू डोंट हैव टू ट्रेन इट एक्सप्लिसिटली सिंस इट इज ऑलरेडी प्री ट्रेन। ओके, अगर आपको किसी स्पेसिफिक डोमेन पे उसको मतलब तैयार करना है तो देन यू हैव टू प्रोवाइड द कॉर्पस एंड देन यू हैव टू रीट्रेन इट अगेन सॉर्ट ऑफ। but generally it works well in most of the zero shot cases. Then applications of LLMs are really vast, so most of the times it is used for some sort of generations. तो अगर आपने देखा होगा कि कोई भी आपको आर्टिकल जनरेट करना है, आपको से कवर लेटर जनरेट करना है, आपको कोई क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जनरेट करना है, आपको टेक्स्ट समराइजेशन करना है, वो सब चीजों के लिए LLMs आर हाईली यूज्ड। they are so much smart in order to understand the context, and they will be able to answer your questions in an informative way. So हाँ, हम लोग बेसिकली अभी हम लोगों ने एलएलएम्स का हिस्ट्री मतलब डिस्कस किया, तो विल ट्राई टू सी कि एलएलएम्स का ब्रेक थ्रू आया कहाँ से, कि मतलब इतने साल तक तो कुछ हुआ नहीं था, अभी अचानक से पिछले 5-7 साल में मतलब दुनिया इधर की उधर हो गई, कैसे हो गया ये सब। सो 2017 में गूगल ब्रेन, मतलब गूगल का एक जो टीम है गूगल ब्रेन, बेसिकली दे केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर विच वाज काइंड ऑफ अ रिवोल्यूशनराइजिंग इन दिस इंडस्ट्री। उस रिसर्च पेपर का नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। दैट इज अ वेरी फेमस रिसर्च पेपर। इस रिसर्च पेपर में दे हैड इंट्रोड्यूस और दे हैड डिस्कस्ड लाइक कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अटेंशन इन डेप्थ। ओके, तो विल जस्ट ट्राई टू सी कि उस मतलब इसमें ऐसा क्या अलग था जो पहले के मॉडल्स में नहीं था। ओके, सो दिस what is a paper actually like brought a paradigm shift in NLP, and transformers actually they were kind of incorporating the self attention mechanism। एंड ये पेपर में सारी चीजों को डिस्कस किया गया था। ये पेपर अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके उसको मतलब देख सकते हो। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो इस पेपर को डिसाइफर करते हैं, मतलब आपको बताएंगे कि इस पेपर में एग्जैक्टली किया गया है। तो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस रिसर्च पेपर बिकॉज इट्स रियली अ ब्रेक थ्रू। सो इसमें होता क्या है ना, हम लोग एनएलपी में आज तक जो भी फाइट हुई है सिंस इंसेप्शन, इट हैज बीन ऑल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा। जो भी आपने मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, ऑल दोज मॉडल्स वेयर लाइक एन अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन एन आईपीएल मैच कमेंट्री सेंटेंस, कोहली स्मैश्ड 6 ऑफ द लास्ट बॉल, व्हाट अ थ्रिलिंग फिनिश।
Okay, the attention mechanism can focus on Kohli and six while processing last ball. Understanding the batter and the action are the most relevant to the part of the sentence. Okay, तो बेसिकली होता क्या है ना, अटेंशन मैकेनिज्म या सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है, जब आप उसको दो या तीन अलग अलग सेंटेंसेस दोगे ना, तो इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज किस मतलब वर्ब से या किस एक्शंस के साथ कंटेक्चुअली रिलेटेड है. तो इन दिस केस अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कोहली स्मैश्ड सिक्स ऑफ द लास्ट बॉल, व्हाट अ थ्रिलिंग फिनिश. ओके, तो इस केस में एज अ ह्यूमन आप इस जब टेक्स्ट को लाइक डिसाइफर करने का कोशिश करते हो तो आप क्या सोचते हो, कोहली ने सिक्स मारा. ओके, आप खुद को एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो, किसने सिक्स मारा, कोहली ने सिक्स मारा. ओके, सो बेसिकली इन योर माइंड यू बेसिकली रिलेट एक्शन ऑफ हिटिंग सिक्स विथ एंटिटी कोहली. करेक्ट, और वो एक आपका कंटेक्चुअल रिलेशनशिप बन जाता है. ओके, तो पहले के जो भी मॉडल्स थे ना, वो ये जो मतलब ये जो पूरा फाइट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. ओके, वो दे वर नॉट एबल टू लाइक कैप्चर दिस इंफॉर्मेशन और कैप्चर दिस कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन अ प्रॉपर फैशन. बट जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म जो इस पेपर में डिस्कस किया था, दैट वाज सच काइंड ऑफ अ ह्यूज ब्रेक थ्रू, जिसमें इट वाज एबल टू इनकॉर्पोरेट सच सॉर्ट ऑफ एन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाइक बिटवीन टू वर्ड्स. तो मैंने अगर ये सेंटेंस बोला है, कोहली स्मैश्ड द सिक्स ऑफ लास्ट बॉल, लाइक बेसिकली इट इज एबल टू अंडरस्टैंड कि सिक्स किसने मारा भाई, कोहली ने मारा. एंड दैट्स हाउ वी एज अ ह्यूमन बेसिकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई अगर कोई बंदा कुछ सेंटेंस बोल रहा है तो आप क्या करते हो, उस सेंटेंस को कंटेक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, तो आई मीन ये पीके जो मूवी था उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में आमिर खान मतलब बोलता है कि इस गोले में मतलब हर कोई अपनी भाषा में बोलता है, एक ही वर्ड है बट उसका मीनिंग अलग है. एंड देन ही ट्राइज टू स्ट्रेस इट अपॉन दी लाइक लैंग्वेज कि अच्छा हमको सिखा रही है. एंड देन ही जस्ट ट्राइज डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स कि अच्छा हमको सिखा रही है, अगर ऐसे बोलेंगे तो उसको इस तरीके से मतलब मीनिंग उसका निकल के आता है एंड सो ऑन. Okay, now he just tries to what he tries to tell is he's not able to understand context in which it was being told. Okay, now obviously machine तो उस same words को identify नहीं कर पाएगा from different context. What in Amir Khan what it tries to does is he will try to basically was emphasizing on the fact कि अगर मैं tone change करता हूँ तो मेरा context change हो जाता है. करेक्ट, तो बेसिकली ऑब्वियसली मशीन तो टोन सुन के कॉन्टेक्स्ट को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, बट हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कोहली और सिक्स को एसोसिएट करने की कोशिश कर पा रहे हैं. ओके, तो ये बेसिकली सेल्फ अटेंशन के थ्रू होता है. तो ये रिसर्च पेपर जो था इट वाज काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू, एंड इट बेसिकली लाइक लिटरली कॉल्ड फॉर अ रिवोल्यूशनरी चेंज, जहाँ पे with the help of self attention mechanism it was able to understand the context with which a particular word or with which particular action was introduced in a sentence. Okay, so this all fight has been in order to understand the context of the data. अगर आपको एक बार कॉन्टेक्स्ट पता चल गया तो आपको सेंटीमेंट पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे, सब कुंडली पता चल जाएगी अगर आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आए. राइट, तो दिस सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म वाज रिवोल्यूशनराइजिंग द एनएलपी इंडस्ट्री. एंड ये जब से मार्केट में आ गया तब किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये इतना मतलब चीजों को चेंज कर पाएगा. बट देन इट वाज लाइक कि एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसको बहुत साल तक किसी ने सॉल्व ही नहीं किया था, वो एक झटके में सॉल्व हो गया. एंड देन उसके बाद फिर आप देख रहे हो पिछले 6-7 साल में आई मीन थिंग्स हैव चेंज्ड एट अ वेरी ड्रास्टिक लेवल. मतलब जिस वे से मतलब जो एलएलएम्स में प्रोग्रेशन हो रहे हैं, दीज आर नॉट एट ऑल एंटिसिपेटेड इन सच स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, कंसिडरिंग कि हम लोगों ने पिछले इतने सालों में इतना डेवलपमेंट नहीं किया, तो पिछले 6-7 साल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया. एंड अगले आने वाले टाइम में भी विल बी लाइक कीपिंग द सेम पेस विद द डेवलपमेंट, सिंस द जो प्रॉब्लम था, जो बॉटल नेक था, जहाँ पे मतलब पूरे ये सब लोग फंसे हुए थे कि कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, वो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम जो था वो बेसिकली सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म ने आपके लिए सॉल्व कर दिया. सो ब्रेक थ्रू विद अटेंशन इज ऑल यू नीड इज attention is all you need is basically a research paper, and it basically brought a breakthrough. Okay, so we'll be trying to like discuss encoder and decoder. Okay, so I will just take you through the encoder's role and decoder's role. So जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एनकोडर, एक होता है डिकोडर. ओके, तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली लीवरेजेस सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म एंड इट हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज एनकोडर, वन इज डिकोडर. ओके, नाउ इट माइट हैपन कि आपके डेटा या आपके मशीन लर्निंग मॉडल में आप सिर्फ एनकोडर भी यूज कर सकते हो या सिर्फ डिकोडर भी यूज कर सकते हो. सो आपका जो बर्ट
जो मॉडल है बेसिकली दैट इज जस्ट एन एनकोडर मॉडल। जीपीटी आपका जो मॉडल है, चैट जीपीटी या जो भी आपके जीपीटीज है, दोज आर बेसिकली जस्ट अ डिकोडर मॉडल्स। ओके, सो मतलब बेसिकली दे आर नॉट द एंटायर ट्रांसफॉर्मर्स, दे आर काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप उसमें से भी एक ही कंपोनेंट यूज करना चाहे तो बेसिकली आई मीन बर्ड के केस में दे हैव यूज्ड एनकोडर, इन केस ऑफ जीपीटी दे हैव यूज्ड डिकोडर। Okay, so encoders basically क्या होता है? Again, it will process the input sequence. Again, I'm not going into like actual algorithmic depth of this, since I think it will take a lot of time in order to discuss the geometric intuition behind it. But I can definitely share some sort of material with you in order to understand these things better. Okay, so encoder basically मोटा मोटा तौर पे it has this bidirectional sort of reading capability. तो वो सेंटेंस को राइट टू लेफ्ट भी रीड कर रहा है, लेफ्ट टू राइट भी रीड कर रहा है, सो इट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बेटर। एंड इट इज यूज्ड मोस्ट इन द केसेस ऑफ सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग, एनोमली डिटेक्शन। तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल इज बर्ट। इन केस ऑफ डिकोडर, तो डिकोडर इज बेसिकली यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, वो लेफ्ट टू राइट जाता है। मतलब अगर आप नेक्स्ट मतलब वर्ड प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बेसिकली तो उसके नेक्स्ट वाला वर्ड के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि मेरे को एक ऐसा बीच का वर्ड प्रेडिक्ट करना है, आई एम रनिंग वेरी फास्ट। ओके, ऐसा मेरा एक सेंटेंस है। नाउ आई हैव आई एम वेरी फास्ट विथ मी, रनिंग बीच का जो है ना वो मिसिंग है। ओके, तो इफ यू आर यूजिंग एनकोडर फॉर दैट ऑपरेशन, तो एनकोडर क्या करता है, उसके पास आई का भी एक्सेस रहेगा, एम का भी एक्सेस रहेगा, वेरी का भी एक्सेस रहेगा, एंड क्विक का भी एक्सेस रहेगा। तो उसके मतलब पूरे टेक्स्ट को लेके इट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि जो बीच वाला वर्ड है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू रनिंग और वॉकिंग। जो भी उसका क्लोजेस्ट मैच रहेगा दैट विल बी, अगर रनिंग आ रहा है तो इट विल रिटर्न एज रनिंग एंड सो ऑन। बट डिकोडर क्या करता है, डिकोडर ओनली वन वे से उसको एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन। सो इट विल ओनली एक्सेस आई एंड एम, and then it will try to like predict the next what do you say, uh, or it will try to predict as running or walking or something like that. Okay, so it is basically a GPT model. It is used in text generations. So GPT models आपके basically they are like used for any sort of generation task. So if you want to like do a text generation, if you want to generate caption for images or for translating languages, then you can just make use of the decoders. In cases of encoders, encoders are bidirectional in nature, and basically these two components form a like basic unit of transform. Okay, so we'll talk about the last relevant thing, which is nothing but GPT, which is generative pre-trained transformer, जो आपका चैट जीपीटी का जो बेसिक मॉडल है। चैट जीपीटी इज बेसिकली एन इंटरफेस, तो उसका बेस मॉडल जो है दैट इज जीपीटी। चैट जीपीटी इज बेसिकली एन इंटरफेस जो मतलब कॉमन पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है, दैट इज चैट जीपीटी। बट उसके जो प्रीवियस उसका जो बैकएंड का जो मॉडल है दैट इज नथिंग बट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेट ऑफ आर्ट लैंग्वेज मॉडल was developed by OpenAI। उसका पर्पस जैसे मैंने आपको बोला कि इट इज अ डिकोडर ओनली मॉडल, एंड वो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर पाता है। Then first version was released in 2018, followed by like GPT-2 in 2019, 3 in 20, and then अभी तो मतलब उसके वर्जन आते ही जा रहे हैं। अभी 4 लॉन्च हुआ था, अभी 4 वो लॉन्च हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम वो लोग 5 लेके आएंगे एंड सो ऑन। उसमें हमारा बहुत ज्यादा एडवांस कैपेबिलिटीज होगी। सो जीपीटी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को ही यूटिलाइज करता है। अगेन इट डज नॉट हैव द एनकोडर कंपोनेंट, इट वर्क्स ऑन जस्ट द डिकोडर कंपोनेंट। सो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को ही वो tries to leverage or tries to mimic, and it is pre-trained on like vast amount of data, and it has been like fine tuned for performing specific tasks which are related to language generation, and it is basically a very strong model which is able to understand the context. So आपने अगर किसी चैट जीपीटी के साथ कभी इंटरेक्शन करने की कोशिश की होगी, then you must be remembering कि even after let's say having 4 or 5 messages in a chat, it is still able to understand the context from the like first statement, what you are trying to say or what you are trying to convey to that particular tool, right? So it is basically a very sharp context aware model, and it basically makes use of that sort of memory in order to perform text generation. So GPT can be used in chatbots, जो आपका चैट जीपीटी है ही, या फिर आपके मतलब दूसरे कंपनीज भी जीपीटी को यूज करके अपने बॉट्स बना ही रहे। कंटेंट क्रिएशन, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अगर कवर लेटर बनाना है, किसी आपके यूट्यूब चैनल के लिए स्क्रिप्ट बनानी है,
फिर इनफैक्ट फॉर पीपीटी अगर मुझे कुछ बनाना है स्लाइड्स के लिए तो मैं उसके लिए यूज कर सकता हूँ, मशीन ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है, टेक्स्ट समराइजेशन के लिए यूज होता है, एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ जीपीटी. देन जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट वन, बेसिकली ओपन एआई का जो लेटेस्ट वर्जन था विच इज नथिंग बट जीपीटी 4o, जो अभी रिलीज हुआ है. आई थिंक इट गॉट रिलीज सम डेज बैक एंड इट इज रियली अ वेरी गुड मॉडल. तो उसमें उन्होंने एक एडिशनल कैपेबिलिटी ऐड कर दिया है, जो मैंने आपको बोला था, जो बेसिक चैट जीपीटी मॉडल का लिमिटेशन था कि वो एक पुराने कॉर्पस पे ट्रेन तो करके रखा था बट इट वाज नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. सो नाउ जो जीपीटी 4o मॉडल है इट बेसिकली हैज एन एक्सेस फॉर ब्राउजिंग, एंड जब वो ब्राउज के लिए उसके पास एक्सेस है तो इट इज एबल टू लाइक इनकॉर्पोरेट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज फ्लोइंग इन रियल टाइम और लाइफ टाइम. ओके. तो एंड दे हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड बेटर व्हाट यू से टेक्स्ट जनरेशन फैसिलिटीज. तो अगर आपने कभी यूज किया होगा तो यू विल बी एबल टू लाइक रियली नोटिस द डिफरेंस बिटवीन जीपीटी 3.5, जीपीटी 4 एंड जीपीटी 4o. मतलब उसका जो टेक्स्ट जनरेशन का जो स्टाइल होता है या फिर उसके जो रिस्पॉन्स देने की जो प्रिसाइजनेस है दैट इज बेसिकली इम्प्रूव्ड एज द मॉडल्स हैव चेंज्ड. Okay. So, and then there is one more feature which is conversational like input acceptance. तो यहाँ पे पहले आप बेसिकली सिर्फ आपको टेक्स्ट थ्रू इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते थे. अभी इट इज एबल टू लाइक कैन आल्सो ingest the videos. So basically जो people who are like blind, so for them it might be a like revolutionary breakthrough क्योंकि now they are able to get an assistant who can help them at every guide with actual real time information for their queries, and then they can just speak out and get what do you say what they want instead of typing the text because they won't be able to do it. So that has been improved capabilities. And yeah, I mean they are kind of coming up with more and more advanced models, but the base model I mean was the GPT-2, and it is some sort of leveraging the transformer capabilities. That's it. So we'll just try to touch upon some of the jargons which we are using in NLP. Then we'll try to like look for the doubts and then we can perhaps stop. Okay. So this is the last slide. So embeddings के बारे में हम लोगों ने already बात करके रखा है. Then there is one more important term which is known as vector database. जब हम लोग GenAI के कोई भी मतलब प्रोजेक्ट में काम करने जाएंगे, that time vector database will come into picture. Again, vector database, as the name suggests, we are basically storing our vector data into some sort of a database. So, I mean, there are like multiple database. So, like ChromaDB is there, Pinecone is there, and FICE is there. There are a number of vector databases which basically many companies have put into market, which basically will store your data in terms of embeddings. Okay, मतलब आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करना चाहते हो तो बेसिकली आपने जो भी न्यूमेरिकल कन्वर्जन किया है इन फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग्स, तो दैट बेसिकली यू आर गोइंग टू स्टोर इट इनसाइड अ वेक्टर डेटाबेस. तो आपको उसके बाद जब भी मतलब कोई भी क्वेरी करनी है तो आप उस डेटाबेस को रेफर करोगे, उसमें से आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो हम लोग रैग्स में देखेंगे. सो दैट इज अ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसको वेक्टर डेटाबेस बोला जाता है कि मतलब आप उस डायमेंशन या आप उस वेक्टर्स को जो हाई डायमेंशनल डेटा है उसको आप उधर सेव करोगे. ओके. टोकनाइजर एक ऐसा मतलब बेसिकली मेथड ऑपरेटर है जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में या फिर सेंटेंसेस में या फिर कैरेक्टर्स में आप उसको ब्रेक कर सकते हो ताकि आप उसको वेक्टराइज कर पाओ. तो आप उसका एम्बेडिंग या फिर आपको उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाओ आफ्टर ब्रेकिंग इट इनटू डिफरेंट वर्ड्स और से सब वर्ड्स और कैरेक्टर्स और समटाइम्स सेंटेंसेस एंड सो. Okay. Then there comes Hugging Face. So Hugging Face is an like it's an open source community that provides you all sort of this large language models. तो जो भी large language models companies release करके आप उन models को Hugging Face पे देख पाओगे. बहुत सारे मतलब large language models are being hosted at Hugging Face. So you can just like download those models from there directly, and then you can just incorporate those models into your analysis. So that is basically a facilitator. Hugging Face is kind of a facilitator which will help you with all sort of uh, large language models. Chunking splitting is basically again a similar sort of ऑपरेशन. सो बेसिकली आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो जब किसी भी डेटा को इनपुट करके लेते हैं तो उसमें एक इश्यू आता है कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ टोकन लिमिट.
तो अगर आप बोलोगे कि मैं बहुत बड़ा डेटा उसमें पास कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो पूरा का पूरा डेटा इंजेस्ट नहीं कर पाएगा। इट विल से दैट कि बॉस मेरी लिमिटेशन है ना, मैं एट टाइम से 5,000 टोकन ही ले पाता हूँ, मतलब 5,000 वर्ड्स ले पाता हूँ, उसके आगे नहीं ले पाऊँ। तो अभी हम लोग काम कैसे करेंगे? अगर मेरे को बड़े पीडीएफ के साथ काम करना है, तो मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना पहले 5,000 वर्ड्स में तेरे को भेज दूंगा, तो उसके बेसिस पे मुझे आंसर दे दे। ऐसा नहीं होगा। अगर वो पीडीएफ बड़ा हुआ तो क्या हो, मेरे को वो पूरा का पूरा पीडीएफ पास करना है। तो बेसिकली उस केस में व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी डिवाइडिंग माय डेटा इनटू डिफरेंट चंक्स। आई विल बी स्प्लिटिंग माय डेटा इनटू डिफरेंट चंक्स थ्रू डिफरेंट डिफरेंट व्हाट यू से चंकिंग ऑपरेटर्स, लाइक रिकर्सिव चंक स्प्लिटर एक हो गया। तो वो बेसिकली क्या करता है, आपका जो पूरा टेक्स्ट होता है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करता है, फिर वो इनपुट करते जाता है आपके मतलब जो एलएलएम। So this is all about the jargons. So on first day, I think this was all about it. तो हम लोगों ने basically इस पूरे session में what we did is we tried covering the NLP, we tried covering the introduction to LLM. Again, it might be little basic for some of the people. Don't worry, हम लोग अगले session से we'll try to touch upon the actual RAG, advanced RAG, and हम लोग applications भी देखेंगे. But I wanted to make sure कि आप सब लोग एटलीस्ट इन सारे जार्गन से फेमिलियर हो। अगर आपको किसी भी जार्गन में डाउट आ रहा है, इफ यू फील कि नो बॉस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेक्टर डेटाबेस, व्हाट इज एम्बेडिंग्स, व्हाट इज हगिंग फेस, either you can ask me, you can just ask in the like, forum, or you can just google it, or like look for some resources on YouTube, or look for some resources on internet in order to get familiarized with these terms. But you have to know these terms before like going ahead. Okay, so for that reason I specially requested नीतीश सर कि हम लोग इस सेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एनएलपी एंड एलएलएम को कवर करते हैं, डायरेक्टली रैक्स को टच नहीं करते। तो डायरेक्टली अगर हम लोग रैक्स के पास जाएंगे तो इट माइट कंफ्यूज सम ऑफ द पीपल। सो फॉर दैट रीजन वी विल बी जस्ट कवरिंग दिस सेशन फर्स्ट। अगर आपको उसके बाद भी लग रहा है कि हम लोगों ने रैक्स को लास्ट सेशन के बाद लग रहा है कि रैक्स को इतने डेप्थ में कवर नहीं किया, तो वी कैन परहैप्स टेक वन मोर सेशन इन ऑर्डर टू कवर लाइक व्हाटएवर टॉपिक्स यू फील कि इसमें कवर करने चाहिए। जो मैंने सिलेबस कवर किया है दैट बेसिकली कवर्स एवरीथिंग, बट इफ यू फील कि कुछ इसमें से भी छूट रहा है, तो डोंट वरी, हम लोग उसको लास्ट के एक हाथ सेशन ऐड करके विल ट्राई टू कवर दैट थिंग इन दैट सेशन एज वेल। सो डोंट वरी, ऑल ऑफ योर क्वेरीज विल गेट एड्रेस्ड। सो फील फ्री कि ये बेसिकली आपके क्वेरीज को आंसर कर देगा। सो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। टुडे लेट्स नॉट स्टिक टू लाइक मोर टाइम। आज का सेशन इट वाज लाइक मोर ऑफ एन इंट्रोडक्टरी सेशन। ओके, सो let's just go to the chats. Will you touch multimodal rack system? Okay, so currently, like in the scope, from the scope of the syllabus, we will be like going with the unimodal rack system. But I can just like come up, or I can just create a multimodal rack system demo. Since like in the start, we are supposed to like cover at least I mean, whenever you are learning any new topic, right? So you will start with some sort of a basic explanation. Right? You will not touch upon the advanced topics at the first only. So we'll try with the unimodal rack system itself. But if time permits, I will come up with a demo which will cover the multimodal rack systems as well. Okay, so the next doubt is please cover transformers in details. So I'm so sorry. I would really love to do it, but the point is, I mean, if I try to like get into depth of that, it will take at least 1 or 2 hours for that. Since अगर आप नीतीश सर के YouTube चैनल देख लोगे ना, तो उसमें आप उन्होंने 2 घंटे का स्पेशली सेल्फ अटेंशन अटेंशन मैकेनिज्म पे उन्होंने वीडियो बनाया। तो आई मीन दैट कवर्स एवरीथिंग। Okay. So you are saying that, okay, then I can check people videos also, LLM, then why I am here. Okay, so why you are here, I will just tell you. So basically, I will try to make sure कि आपको इस अगले जो sessions है, where we are covering RAGs, you will get some new content which is not pre-existing on the say internet as it is. So I will make sure कि आपके जो learning experience में you will get some new learning value. Okay, but अगर मैं ट्रांसफॉर्मर को सच में इन डेप्थ कवर करने जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड फॉर दैट रीजन आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट। बट आई मीन श्योरली यू कैन जस्ट गो अहेड विद द नीतीश सर्स लेक्चर, एंड अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आई मीन यू कैन जस्ट गेट इन टच विद मी। आई कैन जस्ट आई मीन एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट टू यू ओवर अ कॉल, और फिर मतलब या फिर आई कैन जस्ट पास इट ऑन सम डॉक्यूमेंट थ्रू विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। Then the next question is, what is document classification? Okay, so in document classification, basically you are supposed to classify
the different documents in different categories. Okay. So ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन हो गया, मेल क्लासिफिकेशन हो गया, जहाँ पे आपको आपके पास कोई प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज होंगी और आपको उस पर्टिकुलर कॉर्पस को उस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लासिफाई करना। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, जहाँ पे आप मतलब नॉर्मल मशीन लर्निंग में जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लास पे अप्लाई करते हो तो आपके पास दो क्लासेस होते हैं, एक जीरो होता है, एक वन होता है, राइट। यहाँ पे ऐसे समझोगे आपके पास मल्टी क्लासेस है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, एंड देन यू आर बेसिकली ट्राइंग टू लाइक क्लासिफाई ईच डॉक्यूमेंट इनटू डिफरेंट क्लासेस। Next question is, what is corpus with respect to staining? So Rajwal has already answered it. Frequency technique captures the number of times. Okay. Whereas embeddings retain the semantic meaning of the word. Correct. Yeah, you are right. Fine. What is word embedding? So I think that question has been solved now. मैंने इसको 3 बार मतलब उसके बाद एक्सप्लेन किया था. दिस इज ऑन ओल्ड डाउट, सो आई होप कि ये कवर हो गया है. अगर आपको फिर भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट. क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? यस, आई मीन दिस विल बी अवेलेबल. सो इफ यू जस्ट गो टू द कोर्स सेक्शन ना, जहाँ से आपने एनरोल किया था, वहाँ पे हर सेशन का रिकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू गेट. So he is saying we can combine down the TF IDF factor. Okay. Semantic meaning is not intact in TF IDF. Yes, it's not. So semantic meaning basically refers to like what do you say, a sort of an indirect meaning जो physically आपको नहीं दिखेगा. Okay. So indirect meaning जैसे मैंने आपको बोला man and king, अगर आप उसको फिजिकली वर्ड में सिमिलर देखने जाओगे कि मतलब उसमें कोई लेटर सिमिलर है क्या, उसमें कोई मतलब उससे आप नहीं उसको निकाल पाओगे, राइट. अगर टीएफ आईडीएफ क्या करता है, इट विल ट्राई टू सी कि आपका मैन एंड किंग, अगर मैंने इस दोनों की बात की, तो अगर मैन एंड किंग का अगर आप टीएफ आईडीएफ के थ्रू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करोगे, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा देखिएगा कि मैन कितने बार आया है इस पूरे कॉर्पस में, किंग कितने बार आया है, उसके हिसाब से उसको वेट असाइन करेगा. ओके. बट इट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड कि मैन एंड किंग मतलब उन दोनों का रिप्रेजेंटेशन सिमिलर ही आए, क्योंकि वो तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पे मैटर कर रहे हैं कि मैन कितनी बार उस कॉर्पस में लिखा गया है या फिर किंग कितनी बार लिखा गया है. तो उस केस में अगर किंग सपोज 50 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड क्वीन 50 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो उस केस में वो उन दोनों का जो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी, और रिप्रेजेंटेशन आएगा, दैट विल बी सिमिलर इन नेचर, बट दैट इज नॉट सिमेंटिकली सिमिलर. दैट इज सम सॉर्ट ऑफ जैसे फिजिकली सिमिलर व्हाट यू से, इट इज जस्ट लाइक कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी. बट सिमेंटिक मीनिंग विल कैप्चर इनडायरेक्ट रिलेशन, जो हम लोगों ने लाइक थ्रू जेंडर एसोसिएट किया, वो बेसिकली सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर करता है. देन हाउ कंटेक्चुअल मीनिंग इज कैप्चर्ड बाय मशीन. ओके, सो उसके लिए बेसिकली what I can say is you can just, I mean, watch one Nitish sir's video which talks in depth about कि उन्होंने ये word to vec vectors embedding कैसे build किया था. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे अगर आपको मैन एंड किंग को सिमिलर प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे, यू विल एसोसिएटेड थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स. तो आप जेंडर्स के थ्रू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. जैसे मैंने वॉइस का एक फीचर बना लिया, मैंने बियर्ड का एक फीचर बना लिया, मैंने और कोई हाइट का एक फीचर बना लिया, मैंने वेट का एक फीचर बना लिया, एंड उसके हिसाब से दे लाइक द वन हु हैड क्रिएटेड गूगल हु हैड क्रिएटेड दिस एम्बेडिंग, दे हैड ट्रेन्ड अ न्यूरल नेटवर्क with like around 300 million words. तो उनके पास एक बड़ा सा रिपोजिटरी था, and they created some sort of vectors which are relevant with some sort of features, and they trained a like neural network on top of this in order to like come up with a relevant, what you say, a numerical representation of particular vector. So this is how contextual meaning will be captured by machine. Okay, let's go to the what is advantage of LSTM? I think so. अच्छा, जीरो किस बात में लिखा है? ओके, सिमिलैरिटी के रिलेटेड, ठीक है. व्हाट इज एडवांटेज ऑफ LSTM? आई थिंक ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि RNN आपका मतलब फेस करता है प्रॉब्लम जो वैनिशिंग ग्रेडियंट है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम होता है, उसमें वो फंस जाता है बहुत बार. एंड इट बेसिकली ट्राइज टू कैप्चर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि वो बहुत लेंथी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, रिडंडेंट भी है इन अ सेंस.
तो LSTM basically has those gates जहाँ पे it will try to forget some of the information, it will reset some of the information, it will update some of the information. So वो unnecessary का information लेके आगे नहीं जा रहा है, it is filtering the information at each input step. Okay. It has the capability to remember more. Precisely speaking, it has capability to remember only precise things which are required. Okay. So yeah, basically LSTM uses two states compared to this last time. Please share your LinkedIn ID. Okay, let me just write it over here. Will you share this document? Yes, I will be sharing this document. So yeah, ये बात सही है आपकी, पेन का यूज करके थोड़ा ड्रॉ करके आई कुड हैव शोन यू, बट अगेन मैंने बोला कि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू लाइक टू मच ऑफ डेप्थ ऑफ अ टॉपिक. सो आई थिंक सो नेक्स्ट सेशन से आई विल मेक श्योर कि हम लोग पेन एंड मतलब बोर्ड से वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ओके, लेट्स फोकस ऑन रैंक. या वी विल फोकस, डोंट वरी. For text classification, similarity is taken into account. Yes, it is taken into account. How it does sentiment analysis. So for sentiment analysis, I told you the traditional machine learning method, right? In which basically it will clean the data, it will tokenize the data, it will vectorize the data with some sort of embeddings or some sort of numerical conversion. फिर आपके पास वो मशीन लर्निंग फॉर्मेट में डेटा आ गया, फिर आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. जैसे आप नॉर्मल मशीन लर्निंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, आपके पास कोई प्रेडिक्टर्स होते हैं, एक फाइनल रिस्पॉन्स होता है, एंड देन यू बिल्ड अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, राइट? उसके हिसाब से ही वो मतलब सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करता है. Okay. I am talking about text classification. Okay, LSTM themselves do not directly use word similarity. They can benefit from more. Correct. So word similarity जो है वो ऑटोमेटिकली आपके एम्बेडिंग्स के थ्रू कैप्चर होता है. करेक्ट. तो आई मीन अगर आप इफेक्टिव वर्ड एम्बेडिंग यूज कर रहे हो तो वो सिमिलैरिटी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक कैप्चर होगा. अगर मेरा मैन और किंग का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ही सिमिलर है तो दैट बेसिकली आई मीन will be incorporated in any of sort of advanced architecture, तो उसमें वो काम आ ही जाएगा. Okay. So basically LSTM architecture में होता क्या है, LSTM architecture में it has two different short types of memories. One is long term memory, other is short term memory, and it has different gates. जैसे मतलब रिस्पॉन्स में ऑलरेडी लिख के रखा है कि basically you have input gate, you have forget gate. So you are not basically carrying forward, I mean carrying forwarding the information from the like, long term back state. So मतलब in order to solve the problem of disappearing gradients or vanishing gradients or exploding gradients, so it has this specific capability that it basically has two different sort of memories. One is long term, other is short term, and it segregates the information retention through these different sort of frameworks. एक long term से memory capture होता है, एक short term से capture होता है, and so on. So that's why the name suggests long short term memory neural network. Okay, more to cover on RAG and advanced RAG than NLP. That is sure. Yeah, but the point is again, I agree with this that we need foundation. Better to go with you. Don't worry if you like have any doubts or if you think that I haven't covered enough, we can add one more session. Not an issue. GPT-4 can give, yeah, correct. How can we ensure that LLMs can generalize their knowledge and apply their understanding to new situations? Yeah, that is true. No, that was the problem. So that is the purpose of this course. ना हम लोग इसी के लिए तो यहाँ पे बैठे हैं कि basically LLMs अपना knowledge मतलब generalize करने में they had this issue since if you are just dealing with some say very specific information जो उनके ट्रेनिंग के टाइम पे इनकॉर्पोरेट नहीं किए तो बेसिकली इट विल लाइक मेक सम एरर्स व्हाइल रिस्पॉन्डिंग. तो उसी केस में रैग पिक्चर में आता है ना. रैग में आप क्या करते हो, आप एक एडवांस सोर्स से उसको नया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो एंड बेसिकली यू लाइक बेसिकली retrain that algorithm in order to like work better on say corpuses or information of your interest. So उसी के लिए तो रैग पिक्चर में आता है. Why RAG is preferred over fine tuning. So fine tuning is a concept जहाँ पे आप क्या करते हो कि आपके जो मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपके वेट्स होते हैं, अदर हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, बायसेस होते हैं, आप उसको चेंज करते हो, राइट? अभी आप ऐसे एक सिचुएशन इमेजिन करो कि
फाइन ट्यूनिंग में आप क्या करोगे, उस मॉडल को सम सॉर्ट ऑफ उसके वेट्स चेंज कर रहे हो इन अ वेरी सिंपल टर्म्स, बट यू आर नॉट एडिंग एनी सॉर्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन टू इट। अभी अगर आप इसको ऐसी तरह से विजुअलाइज करो, आपका कल पेपर है और आपके मतलब बेसिकली यू हैव टू लाइक लर्न टू टॉपिक्स, टॉपिक वन एंड टॉपिक टू। अभी फाइन ट्यूनिंग में होगा कि आपने टॉपिक वन को पूरा पढ़ा एंड आपका दोस्त आपको आपके मतलब रात को फोन करके बोल रहा है कि भाई कल के पेपर में ना टॉपिक टू से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, देन उस केस में आप क्या करोगे, आप टॉपिक वन को ही वापस अलग वे से पढ़ोगे या फिर टॉपिक टू से भी कुछ चीजें पढ़ोगे? क्योंकि अगर आपने टॉपिक वन कितना भी पॉलिश कर भी लिया तो भी अगर टॉपिक टू से क्वेश्चन आ रहा है तो बेसिकली इट इज नन ऑफ योर यूज। करेक्ट? So point is topic 2 is something which is of your concern, right? So in this case, RAGs, what it will do is it will help you add new information and basically वो new information आपके जो scenarios के questions को अच्छे से मतलब आंसर करने में बेटर हेल्प करेगा। फाइन ट्यूनिंग आपको क्या हेल्प करेगा, बेसिकली इट विल जस्ट help you in order to like what you say fine tune the existing knowledge. Okay, and we are at the end. Yeah, this person is telling correctly. Prajwal, B9. RAG emphasizes factual data than internet data. Might not be. I mean, I don't entirely agree with this statement. फैक्चुअल डेटा क्या है वो बेसिकली आपके ऊपर रहता है, आप बाहर से कुछ भी डेटा उसको भेज सकते हो, दैट इज अप टू यू। आप सिर्फ उसको बोल रहे हो कि भाई ये नया कुछ तो है तेरे पास पढ़ने जैसा, उसको पढ़ और उसके ऊपर मेरे को आंसर दे। अगर आप गलत डेटा दे रहे हो तो वो गलत आंसर देगा। बट आई मीन दैट इज यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल सोर्स इन द रैक्स। डोंट वरी, हम लोग जिनको भी ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ अलग चीजों के बारे में बात चल रही है, तो हम लोग रैक्स को बहुत अच्छे से अगले सेशन में कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट। Gmail uses Nextword predictor, that is correct. Gmail is smart compose. Yeah, this was the important update जो पिछले Google I/O meeting में I mean CEO has shared, and that is a really interesting update. Sir, please upload the documents. Yeah, that I will do. You can please show what is overall course coverage and are we using LangChain and RAG techniques? Yes, sure. So basically, that's what I told you in the beginning. At this session, we had covered NLP and the basic LLM introduction. From next session, we'll be covering RAGs, and in the next session, in the subsequent session, we basically will try to like look at the actual demo using LangChain or Llama Index. I mean, anything would do. And we will, I mean, try to make sure कि RAG techniques पे आपको demo देखने को मिल जाए. Don't worry, ये पूरा theoretical course नहीं है, but थोड़ा theory होगा इसमें, पूरा नहीं होगा, थोड़ा theory. Say I have 1,000 sentences and I want to understand which sentences are similar. What could be our approach? I want to try something for practice. Please suggest different approaches possible. So you can use Yakkad, Cosine. Okay, you have used all of them since you, I mean, still you did not get very good results. Okay. As a very basic choices of similarity matrix, you can make use of these, what do you say, distances. So, I mean, I would like to know more about this problem, why you are not getting like good results. So basically, if your sentences are say physically similar, or say they have like direct presence of words, direct words, okay. So उस केस में लेवेंस्टाइन और याकार्ड वर्क कर पाएगा। बट अगर आपके सेंटेंसेस कंटेक्चुअली रिलेटेड है तो उस केस में भी कोसाइन आपका काम करना चाहिए। मे बी यू माइट नीड अ बेटर लाइक क्लीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। आप शायद से स्टॉप वर्ड्स वगैरह रिमूव करके यू कैन जस्ट ट्राई इट अगेन, or else you let me know more details on this problem. Okay, so why encoder is not more efficient than decoder? Because encoder has capability to go in bidirectional and is also faster comparatively. Then why decoder architecture is preferred in GPT? So encoder, I mean, see, decoder is mostly, I mean, what do you say, it is designed from a perspective जो generation जो आपके task होते हैं उस architectures में decoder is usually preferred. And there are some issues with encoder techniques. Like even if you say that it is bidirectional in nature, since sometimes it might lead to some sort of a what do you say data leakage, जो एक sort of problem था
जो डिकोडर में नहीं है। डिकोडर बेसिकली मेक्स यूज ऑफ राइट मास्क अटेंशन। तो उसमें इट इज बेसिकली क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक टेक्स्ट जनरेशन टास्क, एंड आई मीन दिस इज द basic intuition like why decoder is used in the RAG in the GPU. सर ये रैग होता क्या है, एक मिनट जरा देसी भाषा में सब। ओके, सो रैग वही होता है कि मैंने जैसे बोला ना आपको, चैट जीपीटी जो आपका होता है, वो जो 2022 का चैट जीपीटी उन्होंने निकाला था, उसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लोगे कि भाई 2023 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती या नहीं, ओके, तो वो बोल देगा कि मेरे को पता नहीं, कि मेरा जो ट्रेनिंग डेटा था वो 2021 या 22 तक का ही था। तो अभी अगर आप ऐसे मॉडल के साथ रियल टाइम में काम करने जाओगे, मतलब कोई भी एप्लीकेशन बनाने जाओगे, तो दैट इज नॉट ऑफ मच यूज, राइट? क्योंकि आप बोलोगे यार रियल टाइम में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो लाइव इवेंट है, उसका तो उसको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो तो एक स्टैटिक पर्पस पे ट्रेन हो चुका है ऑलरेडी। बट मेरे को तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रैग्स का यूज कर सकते हो। तो रैग्स में आप क्या करते हो, रैग्स इज बेसिकली रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आप क्या करते हो, आप एक्सटर्नली उसको इंटरनेट का मतलब सोर्स उसको प्रोवाइड कर सकते हो एक्सेस, या फिर आप उसको कोई पीडीएफ पास कर सकते हो, अभी कोई भी डॉक्यूमेंट उसको पास कर सकते हो। एंड आप उसको बोल सकते हो कि ठीक है भाई, अभी मैंने तेरे को क्रिकेट के टूर्नामेंट का पूरा डिटेल्स का डॉक्यूमेंट भेज दिया, अभी मेरे को बता 2023 में इंडिया जीती है। तो वो उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगा, जो उसका न्यू डेटाबेस बन जाएगा, एंड देन इट विल ट्राई टू से कि नो नो, फाइनल में इंडिया हार गई, एंड सो ऑन। So is the content enough for basic understanding? So I'm not sure like what is your doubt. For basic understanding, as in like about what you are asking, if you can just explicitly mention this content in a more precise fashion. Sir, regarding NLP understanding, like in RN and LSTM, which you have explained, I understand it is important to know about this, but for RAG use cases like Q&A chatbots, these needs to be taken care of manually or can be taken care again। हाँ, ये मतलब चीजें लाइब्रेरी से टेक केयर होती है, बट देखो कैसे होता है ना, हम लोग जब भी कोई टॉपिक सीखते हैं ना, विल ट्राई टू कवर द बेसिक्स। देखो अगर आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन बिल्ड करना है ना, तो उस केस में इट्स लाइक जस्ट यू विल जस्ट कॉल लाइब्रेरी, आप उस लाइब्रेरी को कॉल करके दो चार उसमें कमांड्स यूज करोगे एंड एप्लीकेशन बिल्ड करोगे। बट इज दिस गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्गर रन? नो, राइट? बिकॉज आपको कोई भी टॉपिक सीखते समय उसके पीछे का थियरी या फिर उसका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो तीन चार कमांड का जो कोड है, वो तो मतलब आप किधर से भी गूगल कर सकते हो, कोई चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, या फिर लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर सकते हो। बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू लर्न अ टॉपिक। दैट माइट हेल्प यू टू लाइक डेवलप एन एप्लीकेशन। बट अगेन फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, आप अगर कोई रिसर्च करने जाओगे तो आपको अगर फंडामेंटली पता नहीं है, तो आप मतलब इसका यूज कैसे करोगे? तो आई नो कि वो लाइब्रेरी से हम लोग टेक केयर करेंगे, बट यू शुड हैव अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनएन और एलएसटीएम। सर एज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, सर थैंक यू। श्योर, तो मैं बेसिकली थोड़ा मतलब मटेरियल डाल देता हूँ जो मेरे पास है इन द फोरम, एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल ट्राई टू लाइक कवर अपॉन और टच अपॉन द एडवांस कॉन्सेप्ट्स। लेट मी जस्ट शेयर द फीडबैक फॉर्म विद यू। आई मीन आपको सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक दे देना, जो भी आपको मतलब अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे। इफ यू फील कि आई नीड सम इम्प्रूवमेंट फ्रॉम माई एंड, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई दिक्कत हो गई मेरे साथ, मतलब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा कुछ भी चीज, तो वो भी बता देना। बट आई मीन प्लीज गिव द फीडबैक सो दैट नेक्स्ट सेशन में ना अपना टाइम इस पे वेस्ट ना हो। तो लेट मी जस्ट पेस्ट दैट थिंग इन द चैट, लेट मी जस्ट पेस्ट इट। आई एम जस्ट पेस्टिंग द फीडबैक फॉर्म, प्लीज फिल इट, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। आपको जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आए आप प्लीज हाईलाइट करो उसको, या फिर आपको जो भी अच्छी चीजें लगी है वो भी आप हाईलाइट करो। आई हैव शेयर्ड इट, कैन यू जस्ट सी? अच्छा, यू सॉरी सॉरी, इट गॉट जस्ट फॉरवर्डेड टू द होस्ट ओनली। लेट मी जस्ट चेंज द सेटिंग, everyone in the meeting, fine, so I have just shared the feedback form, I hope that you must have received it. सो प्लीज फील इट, अगर आपको अच्छा लगा तो फील फ्री टू गिव पॉजिटिव फीडबैक, अगर आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो फील फ्री टू मेंशन दैट एज वेल, सो दैट मैं अगले सेशन में उसको और अच्छे से इम्प्रूव करूंगा। एंड आई थिंक दैट्स इट। तो हम लोगों ने आज के सेशन में वी ट्राइड कवरिंग एनएलपी एंड इंट्रोडक्शन टू एलएलएम। सो नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई टू जंप ऑन दी रैक्स, एंड फिर हम लोग एप्लीकेशंस वगैरह बनाएंगे, जो भी आपका सिलेबस है वी विल ट्राई टू कवर अपॉन दैट। Okay, so before leaving, please fill this form. It will be really helpful. Okay.
And if you are done, then perhaps we can drop off. Enjoy your rest of the day. Okay. So thank you. I'll just stay here till then. Whoever is done. Okay, thank you. Yes. Who is done? You can just leave, or if you have doubts, you can just paste it in the chat. I will stay here for them till then. Thank you, Prasad. Okay. For the people who haven't filled it yet, please fill it. And after filling the form, you can perhaps leave. Uh, if everyone is done, perhaps we can just drop off. Thanks a lot, guys. Bye. Will be able to cover RAGs in detail in 3 sessions? Yes, sure. Don't worry. Even if you think that we haven't covered everything in depth, you can just, request for whatever is left. We can just cover that part again, the additional session. It's not a issue. Okay. Thank you. Sure. Then see you in the next lecture. What about the code part? Yes, yes. While developing the application, it's all about code, right? This was just an introduction. This has nothing to do with RAG. This is basic fundamental of NLP. You can just get it from any of the YouTube resource. So we'll cover RAGs through code as well. It will not be just a theory. Okay, then I'm just ending this meeting. I hope that everyone has filled this form. So thank you all for participating. Let's see yeah, thank you, Prajar. Yeah, no issues. Now you can just look at the recording. It will be available there for lifetime. Not an issue. You can just go to the course link and just. I'm not sure about this. Let me ask sir about this, but definitely you will be able to get the recording. Hey, thank you, Yusuf. Sure. Yeah. So let's just get drop off. Okay. Thank you. Bye.